Today we were talking about what is the condition of living entity, the material consciousness in this dreadful age of Kali Yuga, sinful age of Kali Yuga. आज हम बात कर रहे थे जीवात्माओं के बारे में, इनकी जो परिस्थिति है इस भौतिक जगत में, इस पापमय युग कलियुग में कैसी परिस्थिति है जीवात्माओं की. And we have so many obstacles inside and outside. और हमारे पास बहुत सारी रुकावटें हैं भीतर से और बाहर से. So hardly anybody is really interested in spiritual life. तो मुश्किल से ही किसी को रुचि है आध्यात्मिक जीवन में. And Prabhupada said even if you do become interested in spiritual life, it's very difficult to understand what is what. और अगर किसी को रुचि भी आती है आध्यात्मिक जीवन में तो फिर भी ये बहुत समझना बहुत मुश्किल है कि क्या क्या है. And who is who? और कौन कौन है. Because we are just beginning in the spiritual life in the contaminated material consciousness. क्योंकि हम आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत कर रहे हैं बहुत ही प्रदूषित भौतिक चेतना में. So under false ego, under modes of material nature, we're just in material consciousness, means three-dimensional consciousness. तो इस भौतिक चेतना में और प्रकृति के तीन गुणों के अंदर इस भौतिक चेतना मतलब तीन आयामों में हम हैं. But the spiritual life, transcendental life, is fourth-dimensional topic. लेकिन आध्यात्मिक जीवन और ये दिव्य जीवन जो है ये चौथे आयाम पे है. So there is nothing within us
हमारे अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, or within our experience, और हमारे अनुभव में, or within our capacity alone, हमारी क्षमता, एकमात्र हमारी क्षमता में, they can help us to understand truly what is happening on transcendental spiritual platform. जो हमें असल में हमारी मदद कर सकता है कि दिव्य स्तर पर क्या हो रहा है। In that sense, we're all spiritually deaf, dumb, and blind. इस अर्थ में हम सब आध्यात्मिक रूप से अंधे, गूंगे और बहरे हैं, And we must scientifically understand that, और हमें इसे वैज्ञानिक रूप में समझना होगा, but we must also personally understand और that. हमें इसे व्यक्तिगत रूप से भी समझना So होगा। spiritual life is a question of revelation. तो आध्यात्मिक जीवन जो है ये प्रकट होने का सवाल है, It's a gift, it's a blessing. ये उपहार है, ये आशीर्वाद है, It is to be revealed to us ये हमारे सामने प्रकट किया जाना चाहिए by mercy. कृपा से। My Gurudev used to say, everybody's thinking they are the seers, मेरे गुरुदेव कहते हैं कि सभी सोचते हैं कि वो जो है दृष्टा है, but actually we are to be seen. लेकिन हमें असल में हम दृश्य हैं, हमें So देखा जाता है। without the mercy of Krishna and his representative bona fide spiritual master, और बिना कृष्णा और उनके प्रमाणिक प्रतिनिधि के कृपा के बिना we cannot purify this material contaminated consciousness, mind and senses. हम इस भौतिक मन और इंद्रियों और चेतना को शुद्ध नहीं कर सकते। Krishna said to Arjuna, I give you divine eyes. कृष्ण अर्जुन को कहते हैं मैं तुमको दिव्य दृष्टि दूंगा। So without divine eyes and divine ears, divine spiritual senses and intelligence, how can we really understand about transcendental spiritual fourth dimensional topic? बिना दिव्य दृष्टि के, बिना दिव्य कानों के हम कैसे इस दिव्य स्तर को समझ सकते हैं, कैसे हम बुद्धि और पा सकते हैं? Are you still trying to figure it out? क्या आप अभी भी समझने का प्रयास कर रहे हैं, पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं? So I was reading some earlier, before you came, I was reading in the Krishna book, Srila Prabhupada's Krishna book, chapter 87, the prayers by Personified Vedas. आपके आने से पहले मैं कृष्णा बुक पढ़ रहा था, जिसमें 87वें अध्याय में प्रभुपाद बता रहे हैं। Of course, Krishna says, by all the Vedas, I am to be known. कृष्ण कहते हैं सभी वेदों के द्वारा मुझे जाना चाहिए। So Vedic knowledge ultimately, that's coming from Supreme Personality of Godhead, Bhagavan Shri Krishna. तो वैदिक ज्ञान जो है भगवान श्री कृष्ण, परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण से आता है। And Krishna says, I come into this world of darkness, Maya Jagat, and to bring the light, right? Today is Diwali, to bring the light of the absolute truth. और कृष्ण बताते हैं मैं इस भौतिक जगत में आता हूँ प्रकाश को लेकर। आज दिवाली का दिन है, तो यहाँ पर प्रकाश लेकर आते हैं भौतिक To जगत। purify the consciousness of the conditioned souls, तो इस बद्ध जीवात्माओं के चेतना को शुद्ध करने के to लिए give them transcendental knowledge और उनको दिव्य ज्ञान देने के लिए, by which they can come to know me. जिसके माध्यम से वो मुझे जान सकते हैं। If we don't know, understand, and have faith in Krishna, how we can surrender to Krishna? अगर आप भगवान को जानते नहीं, समझते नहीं, उनके अंदर श्रद्धा नहीं, तो आप कैसे उनको पा सकते हैं? So in this chapter of the prayers by the Personified Vedas, इस अध्याय में जो व्यक्तिगत रूप है वेदों का, उनका प्रार्थना है। Personified Vedas are offering the prayer that, dear Lord, although great mystic yogis, they have full control over the elephant of the mind and the hurricane of the senses. ये जो योगी हैं, इनका पूरा नियंत्रण है इस जो तूफान की तरह चलने वाला पागल हाथी की तरह, इसके ऊपर पूरा उनका नियंत्रण है मन के ऊपर। So last night Krishna was saying, we read the verse where Krishna is saying that I am the source of all the demigods and all the great sages. कल हम पढ़ रहे थे, भगवान श्री कृष्ण बता रहे थे कि मैं जो सारे देवी देवताओं और ऋषियों का स्रोत हूँ। And even they, the great sages and the demigods, really they do not truly understand me and my name and my personality. और यहाँ तक कि बड़े बड़े ऋषि मुनि, देवी देवता भी मेरे नाम और मेरे व्यक्तित्व को नहीं समझ सकते हैं। And here, the Vedas are saying that the great yogis, they have so much control over the elephant of the mind and the hurricane of their senses. और यहाँ बताया गया है कि ये जो योगी हैं, इनका पूरा नियंत्रण है ये जो पागल, ये जो हाथी की तरह जो मन है और तूफान की तरह चलने वाली इंद्रियां हैं। But unless they take shelter of bona fide spiritual master, लेकिन जब तक वो प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु का शरण नहीं ग्रहण करते हैं, they will fall victim to the material influence. वो जो इस भौतिक प्रभाव के वश में आ जाएंगे।
So great power, great intelligence, controlling mind and senses, but without taking shelter of Krishna and Krishna's representative bona fide spiritual master, they too also will fall victim to the influence of Maya. इतनी पूरी शक्ति से अपने मन और इंद्रियों को पूरी तरह वश में करने के बाद भी अगर कोई भगवान श्री कृष्ण या उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि का शरण नहीं ग्रहण करता है तो भी इस भौतिक प्रभाव के वश में वो आ जाता है. And are never successful in their attempts at self-realization. और कभी भी वो अपने आत्म साक्षात्कार के प्रयास में सफल नहीं हो सकता. Such unguided persons, because they're not accepting bona fide Guru Krishna Parampara, ऐसे दिशा निर्देशित विहीन व्यक्ति जिन्होंने प्रामाणिक परंपरा का शरण नहीं ग्रहण किया, they are compared to merchants going to a sea on a ship without a captain. वो ऐसे नाविक की तरह हैं जो बिना किसी कप्तान के समुद्र में जा रहे हैं. By one's personal attempts, किसी के व्यक्तिगत प्रयास से, therefore one cannot get free from the clutches of the material nature. इसीलिए कोई जो इस माया के भौतिक प्रकृति के पकड़ से बाहर नहीं आ सकता. One has to accept the bona fide spiritual master किसी को स्वीकार करना होगा प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु and work according to his direction. और उनके निर्देश के आधार पर काम करना होगा. Then it is possible to cross over the nescience of the material conditions. तब संभव है इस भौतिक परिस्थिति से बाहर आ पाना. So it's not a suggestion, तो ये एक सुझाव नहीं है, it's a must, it's an essential. ये आवश्यक है, ये जरूरी So है. without Krishna's mercy, and his mercy is he sends us bona fide spiritual master, his true representative. और बिना कृष्ण की कृपा के, बिना कृष्ण कृपा करके हमें अपने आध्यात्मिक प्रमाणिक गुरु भेजते हैं. And without agreeing to surrender to that spiritual master who's representative of Krishna and following his instructions, और बिना सहमत हुए, बिना उन प्रमाणिक आध्यात्मिक गुरु का शरण लिए बिना और उनके निर्देशों का पालन किए बिना, then it is not possible at all to cross over the nescience of the material conditions. ये बिल्कुल भी संभव नहीं है इस भौतिक परिस्थिति से बाहर आ पाना. This is how Krishna is showering his mercy, how he is helping the conditioned living entities. इस तरह से कृष्णा जो है इस बद्ध जीवात्माओं की मदद कर रहे हैं. Śukadeva Gosvāmī, Prabhupada is quoting that he said, all merciful spiritual master, representative of the Supreme Personality of Godhead. Śukadeva Gosvāmī is praying, श्रीधर स्वामी जो है प्रार्थना कर रहे हैं, my spiritual master is most merciful personality. मेरे आध्यात्मिक गुरु जो सबसे कृपालु व्यक्तित्व हैं, He's true representative of the Supreme Lord. वो असल प्रतिनिधि हैं परम पुरुषोत्तम भगवान के. When my mind will be completely surrendered at your lotus feet, कब मेरा मन जो है आपके चरण कमलों में पूरी तरह शरणागत हो जाएगा, at that time, only by your mercy, उस वक्त सिर्फ आपकी कृपा से I shall be able to get relief from all of the obstacles to spiritual life. मैं इन सारे जो रुकावटें हैं आध्यात्मिक जीवन की, इनसे मुक्त हो पाऊंगा. How you doing? All right? Pray to Krishna, Shri Guru Ganga to help you. All right? So Śukadeva Swami is saying that only when I fix my intelligence, mind and senses in following your instructions at your lotus feet, श्रीधर स्वामी बता रहे हैं जब मैं अपने मन को पूरी तरह स्थित कर दूंगा आपके चरण कमलों में, only then will I get relief तभी मैं मुक्त राहत मिल पाएगा मुझे from all of the obstacles in spiritual life. सारी रुकावटें आध्यात्मिक जीवन से. And then and only then shall I become situated in blissful state. और तभी मैं सिर्फ जो है पूरी तरह आनंदित परिस्थिति में रह पाऊंगा. So Prabhupada says that this absorption in the Supreme Lord, in constant contact with the Lord, प्रभुपाद बता रहे हैं इस निरंतर भगवान के सानिध्य में रहना, that can only be performed when one works under the direction of bona fide spiritual master. ये तभी किया जा सकता है जब कोई प्रामाणिक गुरु के निर्देश के आधार पर काम करे. Prabhupada says sometimes people they neglect to accept a spiritual master. प्रभुपाद बताते हैं कई बार लोग जो है प्रामाणिक गुरु को स्वीकार करना मना करते हैं. And instead they endeavor for self-realization by some other practice, mystic yoga practice.
इसके बजाय वो किसी अन्य तरीके जैसे योगा के माध्यम से आत्म साक्षात्कार करने का प्रयास करते हैं. But like the yogi Vishwamitra, there are many instances of failure by that process. और बहुत सारे ऐसे असफल चीज़ें हैं जैसे योगी विश्वामित्र वो भी असफल हुए. So Arjuna is admitting in Bhagavad Gita that to try to control the mind and senses is impractical as trying to stop the blowing of a hurricane or cyclone. तो अर्जुन भगवत गीता में स्वीकार कर रहे हैं अपनी हार और वो बता रहे हैं इस मन को नियंत्रित करना जैसे एक तूफान को नियंत्रित करने के जैसा है. So sometimes the mind is compared to maddened elephants. कभी-कभी मन को जो पागल हाथी की तरह माना जाता है. Without following the direction of a spiritual master, one cannot control their mind and their senses. बिना प्रामाणिक गुरु के दिशा निर्देश का पालन किए बिना कोई मन और इंद्रिय को नियंत्रित नहीं कर सकता. So if you want to control the mind and senses, Krishna says you have to surrender to me. कृष्ण कहते हैं अगर आपको अपने मन और इंद्रिय को नियंत्रित करना है तो आप मुझ पर शरणागत कीजिए. But to understand what does Krishna want from us, how can we what will he accept as our surrender and our service? लेकिन इस बात को समझ पाना कि कृष्ण क्या चीज हमसे स्वीकार करेंगे शरणागति के रूप में. Then Krishna gives us that instruction through bona fide spiritual master. कृष्ण हमें वो निर्देश देते हैं प्रामाणिक गुरु आध्यात्मिक गुरु के माध्यम से. So Prabhupada said that either Krishna or bona fide representative, guru and disciplic succession can free us from the clutches of Maya. प्रभुपाद बताते हैं सिर्फ कृष्णा या उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि जो शिष्य परंपरा में हैं वो आपको मुक्त कर सकते हैं इस जगत से. So without following Krishna's instruction that we receive through the spiritual master, one will not be able to properly control their mind and their senses. तो बिना कृष्णा के निर्देश के पालन के बिना जो प्रामाणिक गुरु के माध्यम से हमें मिलता है हम अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित नहीं कर सकते. In other words, if one practices some type of yoga or mysticism, दूसरे शब्दों में कहें अगर कोई किसी तरह का योगा और इस तरह का अभ्यास करता है, he does not accept the bona fide spiritual master, वो प्रामाणिक गुरु स्वीकार नहीं करता है. Prabhupada says he will surely fail. प्रभुपाद कहते हैं वो अवश्य ही असफल होगा. And will simply be wasting their most valuable time. और सरलता से अपना सबसे कीमती समय नष्ट कर रहा है. So we're quoting the authority, Guru Sadhu Shastra. हम गुरु साधु शास्त्र से यहाँ पर बात कर रहे हैं. This is the science of Krishna consciousness. ये कृष्ण भावनामृत का विज्ञान है. If we want to purify our consciousness, control mind and senses, get out of Maya, this is the procedure, this is the process. अगर आप माया से मुक्त होना चाहते हैं, अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करना चाहते हैं, चेतना को शुद्ध करना चाहते हैं, तो यह है प्रक्रिया. Otherwise, it will not be possible to purify and control the mad mind and senses. वरना यह संभव नहीं है इस चेतना को शुद्ध करना और इस पागल मन और इंद्रियों को नियंत्रित करना. Maya will just give so many thoughts of sinful life and material sense gratification. माया जो है बहुत सारे विचार डालेगी भौतिक इच्छाओं के और पापमय इच्छाओं के. Then thinking, feeling, and willing will manifest. फिर सोचना और उसके ऊपर योजना बनाना. And we are forced to commit sinful activity. और हम हमारे ऊपर जबरदस्ती होगी पाप में कर्मों में लगने के लिए. And that sinful activity turns into sinful reaction, means a punishment. और ये पाप में क्रिया जो है पाप में फल के रूप में सामने आएगा और इसका मतलब है हमें दुख भोगना पड़ेगा. So if we're intelligent and wise, this is the way how to find real peace and happiness by purifying, controlling mind and senses. अगर हम बुद्धिमान हैं, अगर हम समझदार हैं, तो ये प्रक्रिया है जिससे हम अपने मन और इंद्रियों को शुद्ध कर सकते हैं, चेतना को शुद्ध कर सकते हैं. If we try any other way but this way, we will surely fail, and we are simply wasting our most valuable time. अगर हम इसके अलावा कोई और अन्य प्रक्रिया को चुनते हैं, तो हम अवश्य असफल होंगे और हम सरलता से अपना समय नष्ट कर रहे हैं. Prabhupada explained Vedic injunction is no one can have full knowledge. प्रभुपाद बताते हैं वैदिक no one can have full knowledge किसी को पूर्ण ज्ञान नहीं हो सकता है without being under the guidance of an acharya. बिना दिशा निर्देश के आचार्य के दिशा निर्देश के बिना. How's he doing? He's doing okay? Yes. Is Hindi is good? Yes. Yeah, he's doing all right? All right, thank you for helping me. I appreciate it. Prabhupada quoting Acharyavan Purusho Veda that one who has accepted an acharya
then knows what is what. जिसने भी आचार्य को स्वीकार किया है वो ये जान सकता है क्या क्या है. So bona fide guru, he's getting his intelligence and his faith and knowledge from Krishna, Krishna Parampara. प्रमाणिक गुरु अपना ज्ञान, अपना विश्वास और समझ जो है वो कृष्ण से प्राप्त करते हैं. So his guru Krishna always whispering in his ears. तो गुरु और कृष्ण हमेशा उनके कान में फुसफुसाते हैं. Then if you hear very nicely, then you'll be able to see and understand very nicely. अगर आप बहुत अच्छे से श्रवण करेंगे तो आप बहुत ही अच्छे से देख और समझ पाएंगे. So Prabhupada said, if you receive perfect knowledge from perfect source, प्रभुपाद बताते हैं अगर आप पूर्ण ज्ञान पूर्ण स्रोत से प्राप्त करेंगे, then your knowledge will also be perfect. तो आपका ज्ञान भी पूर्ण हो जाएगा. So a spiritual master, he has a particular type of vision. तो आध्यात्मिक गुरु के पास एक विशेष प्रकार का By the mercy दृष्टि of होता है. Krishna and Krishna Parampara, he has a different type of vision. So he takes off his specs and then he says, okay, now put these on and now you see. तो गुरु और कृष्ण के पास उनका एक विशेष प्रकार का चश्मा होता है जिससे वो आपको वो दृष्टि दे सकते हैं जिससे आप फिर देख सकते हैं. Those are very special glasses that he has. बहुत विशेष प्रकार का चश्मा होता है उनके पास. So if you're very fortunate, he'll let you look through those glasses. तो अगर आप बहुत भाग्यवान हैं तो वो आपको अनुमति देंगे उन चश्मों से देखने का. Then as Krishna says to Arjuna, I'll give you divine vision, divine eyes. कृष्ण बताते हैं अर्जुन को मैं तुमको दिव्य दृष्टि दूंगा, दिव्य आंखें दूंगा. And divine ears. और दिव्य कान दूंगा. By which you will see and hear Krishna directly. जिसके माध्यम से तुम सीधे सीधे कृष्ण को देख और सुन सकते हो. Just like Sanjay. जिस तरह संजय ने देखा. He said, my spiritual master Śrīla Vyasadeva, he purified my mind and my senses. बताते हैं श्रील व्यासदेव ने मेरे आध्यात्मिक गुरु ने मेरे मन और मेरे इंद्रियों को शुद्ध कर दिया. Therefore, I was able to directly hear Krishna on battlefield of Kurukshetra. इसलिए मैं योग्य हो पाया भगवान श्री कृष्ण को सीधे सीधे देख पाने के लिए कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में. So we need divine eyes, divine ears by the mercy of Krishna and Krishna's representative. तो हमें दिव्य कान और दिव्य नेत्र चाहिए गुरु और कृष्ण की कृपा से. Thank you. Now it's cooled down after this. It's like gymnasium. ऐसा लग रहा था हम जिम कर रहे थे. This is transcendental workout session. दिव्य हम वर्कआउट कर रहे हैं यहाँ पर. Body, mind, and soul. All inclusive. Everything is all inclusive. शरीर, मन और आत्मा सब इसमें जुड़ा हुआ है. Choo-choo. Little. थोड़ा थोड़ा. So without coming under the guidance of bona fide guru in Krishna Parampara, बिना प्रमाणिक गुरु के दिशा निर्देश में आए बिना परंपरा में one will remain spiritually deaf, dumb, and blind, just groping in the darkness. कोई जो है अंधा गूंगा और बहरा बना रहेगा और बस अंधेरे में भटकता रहेगा. And the first service is Shravanam, to hear from bona fide guru. और जो पहला That's सेवा Srinu Krishna said. पहला जो सेवा है वो श्रवण है, प्रमाणिक गुरु से श्रवण करना. कृष्ण कहते हैं तत् श्रीनु. The favor of the spiritual master, Prabhupada said, is not received through any other part of the body except the ear. आध्यात्मिक गुरु का एहसान जो है शरीर के किसी और अंग से नहीं, सिर्फ कान के द्वारा प्राप्त किया जाता है. So if we can become expert in hearing and we hear perfectly, तो हम निपुण हो सकते हैं श्रवण करने में और बहुत ही अच्छे तरीके से श्रवण कर सकते perfect हैं. knowledge पूर्ण ज्ञान from perfect source, पूर्ण स्रोत से, then your knowledge will be perfect. तो आपका ज्ञान पूर्ण होगा. And Prabhupada said, that is my perfection. प्रभुपाद कहते हैं यही मेरी सिद्धि है. I perfectly heard perfect knowledge from perfect source. मैंने पूर्ण तरीके से सुना, पूर्ण ज्ञान पूर्ण स्रोत से. And I'm presenting to you that perfect knowledge without adding or subtracting anything. और मैं यही पूर्ण ज्ञान प्रस्तुत कर रहा हूँ बिना किसी जोड़ के, बिना किसी घटाव के. Prabhupada said, that is my perfection. प्रभुपाद कहते हैं यही मेरी सिद्धि है. So without coming under the guidance of bona fide acharya, guru, one cannot know what is what. बिना प्रमाणिक गुरु आचार्य के दिशा निर्देश को पालन किए बिना कोई ये नहीं जान सकता क्या क्या है. And the absolute truth, it cannot be understood by just putting forward so many arguments. और ये परम सत्य जो है ये नहीं समझा जा सकता बहुत सारे बहस के माध्यम से. If we have humble question, that's another story. But just putting forward arguments, we cannot come to understand absolute truth in this way. अगर हमारा कोई सवाल विनम्र सवाल है
तो हम समझ सकते हैं, वरना बहस के माध्यम से हम परम सत्य को नहीं समझ सकते। So this was one verse that I was reading and thinking about. तो ये जो एक श्लोक है मैं पढ़ रहा था और इसके बारे में सोच रहा था। Any question on that? किसी को कोई सवाल है इस पे? Yes. Gurudev, I have a question that we are told in the morning that we conditioned souls have all anarthas. You are saying in the morning that conditioned souls have all the anarthas. Conditioned soul as well? Anarthas. Tell me, not my. Conditioned souls have all the anarthas. Yeah. So I have a question that means we cannot understand Krishna. And basically I have another question that even Anarthas is Maya. Maya is like the darkness. अनर्थ माया है, माया अंधकार है। If we're in the darkness, अगर हम how we अंधकार can में understand properly? तो हम कैसे अच्छे तरीके से समझ सकते हैं? so even the Guru is in fourth dimensional position like Krishna for the conditioned soul. What is it, Adam? Even the Guru is in the fourth dimension. Even the Guru is in the fourth dimension. You better hope that Guru's in the fourth dimension. तो उम्मीद रखो कि वो गुरु जो है fourth dimension में हो, Otherwise, he's not a guru. वरना वो गुरु ही नहीं है। If he's speculating as well as you're speculating, how's he going to help you? अगर वो तुम्हारी तरह ही मनोधर्म कर रहा है तो तुम्हारी क्या मदद करेगा? If he's speculating, means he doesn't know. अगर वो मनोधर्म लगा रहा है इसका मतलब उसको पता Then नहीं, he's also deaf, dumb, and blind. कि वो भी अंधा गूंगा और बहरा है। So how's blind man going to help you if you're blind? कैसे अंधा आपकी व्यक्ति आपकी मदद करेगा? So that's my question is the conditioned soul is already blind, so how can he recognize fourth dimensional person? Because the conditioned soul is already surrendered to You him. cannot recognize. You're not the seer. Only if you get mercy of Krishna and Krishna's representative, if they shower mercy on you, only then can you understand. प्रभु पूछ रहे हैं कि अगर वो चौथे आयाम पे हैं तो कैसे हम उनको समझ सकते हैं? तो गुरुदेव बता रहे हैं बिना गुरु और कृष्ण के कृपा के माध्यम से हम नहीं समझ सकते हैं उनको, जब तक वो हमारे पर कृपा ना करें हम उनको नहीं देख पाएंगे। Mercy is required. कृपा की आवश्यकता है। If you cry to Krishna, Krishna, I'm suffering so badly here. अगर आप कृष्ण के सामने रोएंगे, कृष्ण मैं पूरी तरह यहाँ पे दुख भोग रहा हूँ, I have no shelter, no protection. मेरे पास कोई शरण नहीं है, कोई रक्षण नहीं है, Nothing, nobody can help me. कोई भी मेरी मदद नहीं कर सकता। Only they said if I pray to you and cry before you, you're my only last hope. वो कहते हैं कि अगर मैं बस आपके सामने रोऊंगा, आप ही मेरी आखिरी उम्मीद है। If you'll shower your causeless mercy on me, only then it will be possible. अगर आप अकारण मेरे ऊपर कृपा करेंगे, यही मेरी एकमात्र उम्मीद है। All Vaishnavas, they all pray that I admit my defeat. सारे वैष्णव ये बोलते हैं कि वो स्वीकार करते हैं, मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ। Right? They all admit I tried to control my mind and senses, not possible. सारे वो स्वीकार करते हैं, मैंने अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रण करने का प्रयास किया, ये संभव नहीं है। Only leading to sinful activity and the punishment. ये मुझे सिर्फ और सिर्फ पापमय कार्यों में और सारे दंड की तरफ लेकर जा रहा है। So finally they tried to surrender to Krishna. तो अंत में उन्होंने कृष्ण को शरणागत करने का प्रयास If किया। it's sincere crying of the soul, then Krishna will shower his causeless mercy onto us. अगर ये एकनिष्ठ क्रंदन है आत्मा का, तो कृष्ण उसके ऊपर अपनी कृपा बरसाएंगे। And he'll make an arrangement for us to meet the bona fide guru. और वो हमारे लिए एक व्यवस्था करेंगे जिससे हम एक प्रामाणिक Sometimes गुरु को that प्राप्त कर guru सकते will हैं। come to you, कभी गुरु आपके पास आएंगे, and sometimes you'll go to that guru. या कभी आपको गुरु के पास जाना होगा। But that arrangement is made by the Supreme Lord. लेकिन ये व्यवस्था की जाएगी परम भगवान के द्वारा। Then when you meet the guru, bona fide guru, by Krishna's arrangement, still we're deaf, dumb, and blind. लेकिन जब आप उनकी व्यवस्था से, भगवान की व्यवस्था से प्रमाणिक गुरु से मिलेंगे, तब भी आप जो है अंधे, गूंगे और बहरे ही हैं। So unless that sadhu guru showers his causeless mercy on you, जब तक वो साधु गुरु आपके ऊपर अपना कृपा, अकारण कृपा आपके ऊपर नहीं बरसाता, and purifies your mind and your senses, और आपके मन और आपके इंद्रियों को शुद्ध नहीं करता, only then will you get intelligence and faith to understand it. तभी आप बुद्धि और श्रद्धा पा सकते हैं इसको समझ पाने की। So two mercies are required: mercy of Krishna, mercy of sadhu guru. दो कृपा की जरूरत है, कृष्णा की कृपा की और साधु गुरु वैष्णव की कृपा की। Without that mercy, we cannot even get out of material consciousness. It's impossible. उनकी कृपा के बिना हम इस भौतिक चेतना से भी बाहर नहीं आ सकते, ये असंभव है।
I'll read you a nice purport to explain this point. मेरे पास एक बहुत अच्छा तात्पर्य है इस बिंदु को व्याख्या करने के लिए। And this is from Śrīmad Bhagavatam, 3rd canto, श्रीमद् भागवतम तीसरे स्कंद से है, 25th chapter, 25 अध्याय, text 9, purport. 9वां श्लोक तात्पर्य। Srila Prabhupada says, Kapila Muni, he's direct expansion of Krishna. श्रील प्रभुपाद बताते हैं कपिल मुनि जो है भगवान श्री कृष्ण के विस्तृत रूप हैं, Who is the sun of spiritual knowledge. Krishna is like the sun. वो जो सूर्य हैं आध्यात्मिक ज्ञान के, कृष्णा जो है सूर्य के जैसे हैं, And Maya is the darkness. माया अंधकार के जैसे हैं। Material world means Maya Jagat, means the darkness, ignorance. भौतिक जगत मतलब माया जगत, मतलब अज्ञान अंधकार। So as the sun dissipates the darkness of the universe, जिस तरह सूर्य जो है इस ब्रह्मांड के अंधकार को दूर करता है, so when the light of the Supreme Personality of Godhead comes down, जब भगवान परम पुरुषोत्तम भगवान का प्रकाश यहाँ पर अवतरित होता है, it at once dissipates the darkness of Maya. ये तुरंत ही माया के अंधकार को दूर कर देता है। So Krishna comes, Krishna devotees come तो कृष्ण by आते their हैं, association, presence, जब कृष्ण आते हैं, कृष्ण के भक्त आते हैं उनके संग से, उनकी by their उपस्थिति causeless से, mercy, उनके बिना कारण की कृपा से, then they will dissipate or destroy all of the ignorance, all of the darkness which is covering our mind, intelligence, and senses. ये पूरी तरह से हमारे मन और हमारे इंद्रिय के अंदर जो अंधकार है, अज्ञान है, उसको पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं। We have eyes, हमारे पास आंखें हैं, but without the light of the sun, our eyes are of no value. पर बिना सूर्य के प्रकाश के हमारी आंखों का कोई मोल नहीं है। So we have eyes, हमारे पास आंखें हैं, but if there's no sun and no electricity, then we cannot see anything. लेकिन अगर सूर्य नहीं है, बिजली नहीं है, तो हम कुछ भी नहीं देख सकते। So our vision is dependent on the sun. तो हमारा दृष्टि जो है सूर्य के ऊपर आधारित है, Otherwise, the eyes alone will have no value. वरना आंखों का सिर्फ कोई मोल नहीं है। So similarly, without the light of the Supreme Lord, उसी तरह से भगवान के प्रकाश से or without the divine grace of the spiritual master, और बिना कृपा के आध्यात्मिक गुरु के one cannot see things as they are. कोई उन चीजों को यथा रूप में नहीं देख सकता। So without mercy of Krishna, mercy of bona fide Guru, we cannot purify this darkness of material contaminated consciousness. It's not possible on our own. तो बिना कृष्ण की कृपा के, आध्यात्मिक गुरु की कृपा के बिना हम इस भौतिक दूषित चेतना को जो हमारे मन और इंद्रिय में है, इसको दूर नहीं कर सकते। Can I ask one more question? Bhagavatam, it is said that you have to ask about it, inquire about the absolute truth. So in that case, I want to ask that from my childhood, I only know my mother, father, family, and my grandmother, all those people who I'm attached to. But I actually don't know about Krishna, who is he? So I want to know who is he, because I cannot see him, I cannot hear him, and his representatives also cannot be seen. So actually I want to know who is he. What is it? From the childhood, we're supposed to, in human form of life, we're supposed to inquire into the absolute truth. But I've only known my mother and father and relatives since childhood. So I want to know who is Krishna actually, and who are his representatives. Ask Krishna. Convince Krishna that you really want to know him and his representative. तो प्रभु का सवाल है कि मानव जीवन का भागवत में ऐसा बताया है, उद्देश्य है कि वो परम सत्य के बारे में जिज्ञासा करे। लेकिन मैं बचपन से जैसे अपने माता पिता और अपने दादी इन सब से आसक्त था, तो मैं उनसे उनके बारे में जानता हूँ उनसे, लेकिन मुझे भगवान के बारे में, कृष्ण के बारे में नहीं पता। तो मुझे आध्यात्मिक गुरु के बारे में नहीं पता, तो मैं कैसे जान सकता हूँ? तो गुरुदेव ने बताया कि आपको कृष्णा से पूछना होगा, कृष्णा को आश्वस्त करना होगा कि आप असल में उनके बारे में जानना चाहते हैं, उनको समझना चाहते हैं। So if you are genuinely, sincerely wanting to know, तो आप असल में और एकनिष्ठ होकर जानना चाहते हैं, and you must know, you're greedy to know, और आप अवश्य जानना चाहते हैं, आप जानने के लिए not लोभी out हैं, of some inquisitiveness, बस किसी जिज्ञासा के लिए नहीं, but perfect anxiousness to know, बल्कि पूर्ण तरह से चिंता है आपको जानने की। then Krishna, by his causeless mercy, and Guru, by his causeless mercy, may reveal to us.
तो गुरु और कृष्ण अपनी अहेतु की कृपा से आपको अपने सामने प्रकट कर सकते हैं। So how sincere and serious are you तो आप कितने एकनिष्ठ और कितने to गंभीर really understand it? असल में इसको समझने के लिए। I'm asking this question because I'm asking you a question. मैं आपको सवाल पूछ रहा हूँ। How sincere and serious are you to want to know Krishna and Krishna's true representative? How much spiritual greed do you have for I that? want to know fully about him. कितने I want to know fully about him. I want to know fully about him. Because I'm actually. How much greed do you have in sincere interest to understand about Krishna and Krishna's representative? That is my 100% question. clear. That is my question. मेरा सवाल है कि आपको कितना आपके अंदर लोभ है, कितना आपका इच्छा जो है एकनिष्ठ है भगवान और भगवान के प्रतिनिधि को जानने के लिए। I have full greed to know about him. I have 100% greed. I am having full greed. You have 100% greed to know Krishna and Krishna's true representative? मेरे अंदर 100% क्या आपके अंदर 100% लोभ है भगवान और भगवान के प्रतिनिधि को जानने के लिए? Is that what you just said? क्या ये आपने कहा है? Because that's the Is reason. that what you just said? क्या ये आपने कहा अभी? You have 100% full greed to want to know Krishna and Krishna's representative. Yes, Is I that want what to you know. just, is that what you just said? Yes. आपके अंदर पूरा 100% लोभ है भगवान और भगवान के प्रतिनिधि के बारे में जानने के लिए। क्या यही आपने कहा अभी तुरंत? And you believe that? और आप इसको पूरी तरह विश्वास करते हैं? Yes, So my question to you is, if that's true, then why is Krishna and Krishna's representative not revealing themselves to you? तो मेरा ये सवाल है आपसे, क्यों कृष्ण और कृष्ण के प्रतिनिधि आपको अपने सामने प्रकट नहीं कर रहे हैं? That I don't You know. say you have 100% interest to want to know Krishna and Krishna's representative, Personified Guru. आप कह रहे हैं That's what you आपको believe. आप कह रहे हैं आपको 100% लोभ है भगवान और भगवान के प्रतिनिधि के बारे में जानने के लिए, और ये आप उसको पूरी तरह विश्वास करते हैं इस बात पे। And yet Krishna and Krishna's representative who want to reveal themselves to you are refusing to reveal themselves to you. लेकिन फिर भी कृष्ण और कृष्ण के प्रतिनिधि जो स्वयं को आपके सामने प्रकट करना चाहते हैं, उन्होंने मना कर दिया है आपको अपने सामने प्रकट करने के लिए। So why is it like that? तो ऐसा क्यों है? What is the problem? समस्या क्या है? Is Krishna not understanding your 100% greed to know him? क्या कृष्ण समझ नहीं पा रहे हैं आपके 100% लोभ को उनको समझने के लिए? Maybe he's taking some time to explain me and reveal. Because Maybe he's taking some time to explain me and reveal. You think Krishna is slow? वो पूछ रहे हो सकता है कृष्ण थोड़ा समय ले रहे हैं अपने आप को मुझे सामने प्रकट करने के लिए, तो गुरुदेव बोल रहे आपको लगता है कृष्ण इतने धीमे हैं? I don't think Krishna is slow. I think somebody else is a little slow, if you know what I'm saying. मुझे नहीं लगता कृष्ण इतने धीमे हैं, कोई और जरूर धीमा है, आप समझ सकते हैं। No offense. कोई अपराध नहीं। then how can I be fast to know him so that he can reveal himself to me? How can I be fast to know him so that he can reveal himself to me? Well, first of all, I can understand by Krishna's mercy that you're not a very serious person. तो प्रभु पूछ रहे हैं कि तो कैसे मैं तेज हो सकता हूँ ताकि मैं भगवान मुझे अपने सामने प्रकट करें? तो मुझे बता रहे हैं कृष्णा की कृपा के माध्यम से मैं ये समझ पा रहा हूँ कि आप बिल्कुल भी गंभीर व्यक्ति नहीं हैं। So you're like a madman. आप एक पागल Crazy fellow. आप एक पागल व्यक्ति के जैसे हैं, पागल लड़के हैं। So this science of fourth dimensional spiritual transcendental knowledge is not meant for crazy, foolish people. ये जो विज्ञान है, जो दिव्य चतुर्थ आयाम का विज्ञान है, ये पागल लड़कों के लिए नहीं है। So you can never know, you can never get mercy if you're crazy and foolish and childish. तो आप कभी नहीं जान सकते, आप कभी समझ नहीं सकते, आप इस तरह से पागल और बचपना करेंगे तो You're not a serious person. आप एक गंभीर व्यक्ति नहीं हैं। This is meant for serious people. ये गंभीर व्यक्तियों के लिए है। Anyone else have a question? किसी का कोई और सवाल है? Yes. Give the mic to someone else who's more serious than you. माइक्रोफोन किसी और को दीजिए जो ज़्यादा गंभीर You're हो। just like a joker. आप एक जैसे जोकर के जैसे हैं। You think you're joking? You'll see how much Krishna is a joker. आप सोचते हैं आप बहुत मजाक करें, आप देखिएगा कृष्णा कैसे मजाक करते हैं। You want to cheat Krishna? He'll very nicely cheat you.
आप कृष्णा को ठगना चाहते हैं, बहुत अच्छी तरह से आपको ठगेंगे, That's for sure. ये अवश्य होगा। Yes, Sanathan. Srila Gurudev, you were explaining that the spiritual master has different kind of specs, and those who are very fortunate, then they can get that spec, those specs to have a different kind of transcendental vision. Are you going to just grab them up the spiritual master's face? Give me those specs. So, how the person becomes fortunate? Translated? So, सनातन प्रभु पूछ रहे हैं कि आध्यात्मिक गुरु के पास जो दिव्य चश्मे हैं, जिससे और बहुत जो भाग्यवान हैं उनको वो दिव्य चश्मे मिलते हैं, तो गुरुदेव बता रहे हैं क्या आप वो चश्मे गुरु से जाके छीनना चाहते हैं क्या? I want to see what you're saying. मैं देखना चाहता हूँ आप क्या कह रहे हैं। So, how does one become so fortunate that spiritual master kindly gives that specs, special specs to the person? There's many qualifications to get mercy. तो प्रभु पूछ रहे हैं कि कैसे कोई इतना भाग्यवान हो सकता है कि आध्यात्मिक गुरु जो है अपनी कृपा के माध्यम से वो दिव्य चश्मा उनको दे। तो गुरुदेव बता रहे हैं बहुत सारी योग्यताएं हैं। Seriousness for the subject matter. कितने गंभीर हैं आप इस विषय वस्तु को समझने के लिए। Extreme, perfect inquisitiveness. बहुत ही ज़्यादा और पूर्ण जिज्ञासा। And humble state of mind. विनम्र मानसिकता से। No pride, no arrogance. बिना अहंकार, बिना किसी के गुस्सा, बिना किसी क्रोध के। Submissive, humble mood and attitude. विनम्र और विनीत भाव से। Eager and greedy to really learn it and to understand it. उत्सुकता और लोभ इसको समझने के लिए और इसको जानने के लिए। This will make the spiritual master much more inclined to want to take you serious. ये आप आध्यात्मिक गुरु को ज़्यादा आपकी तरफ मोड़ेगा, आपको ये समझाने के लिए आध्यात्मिक गुरु की आपका and to shower his cosmos mercy and blessing onto you. और वो अपनी अहेतु की कृपा आपके ऊपर देंगे। We have to do pleasing service. हमें जो है वो प्रसन्न करना है A सेवा humble से, state of mind. विनम्र मानसिकता से। And the first service is Shravanam, hearing from the spiritual master. और पहला जो सेवा है श्रवणम, प्रामाणिक गुरु से सुनना। So without this very much serious, attentive mood to hear and to learn, और बिना इस सावधानी पूर्वक श्रवण के और जानने की जिज्ञासा के, सीखने की जिज्ञासा के बिना we cannot get necessary mercy from Krishna and Guru. हमें आवश्यक कृपा नहीं मिल सकता कृष्णा से और साधु गुरु। Does that help? क्या आपकी मदद हुई? In the Bhagavatam purport 211, Prabhupada speaking. भागवतम 211 तात्पर्य में प्रभुपाद बता रहे हैं। By the grace of Lord Krishna, Śukadeva Gosvāmī, he has reached to Parīkṣit Maharaj. कृष्ण की कृपा के माध्यम से शुकदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज के पास पहुंचे। So because Parīkṣit Maharaj was devotee क्योंकि परीक्षित महाराज भक्त थे and not envious of Krishna, कृष्ण से ईर्ष्या नहीं and करते थे, depending on Krishna, कृष्ण पर निर्भर थे, then Krishna sent his true representative, Śukadeva Gosvāmī. तो कृष्ण ने अपने असल प्रतिनिधि को भेजा शुकदेव गोस्वामी को। So Śukadeva Gosvāmī was sent to help him in the process of self-realization. तो शुकदेव गोस्वामी को भेजा गया उनकी मदद करने के लिए, आत्म साक्षात्कार के विज्ञान को समझने के लिए। That is Krishna's first installment of mercy. ये कृष्ण का प्रथम इंस्टॉलमेंट है कृपा का। And without the spiritual master's help, और बिना आध्यात्मिक गुरु के मदद के बिना nobody can become self-realized. कोई भी आत्म साक्षात्कार नहीं प्राप्त कर सकता। Vaishnava philosophy does not allow that you shall become self-realized by your own endeavor. वैष्णव सिद्धांत ये अनुमति नहीं देता कि आप आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर सकते हैं स्वयं के प्रयास से। Mercy of Krishna and bona fide Guru, Sadhu Guru, that is required. कृपा साधु गुरु वैष्णव और कृष्ण का ये आवश्यक है। Otherwise we cannot even purify our own consciousness. वरना हम अपने स्वयं की चेतना को भी शुद्ध नहीं कर सकते।
what to speak of receiving transcendental instruction. और इस बात का क्या कहना कि हमें किसी दिव्य निर्देश प्राप्त हो. So Prabhupada says if you're very sincere and very serious about wanting to understand Krishna and to surrender to Krishna, then his first installment of mercy is he'll send to you a bona fide spiritual master in his disciplic succession. तो ऐसा बताते हैं अगर आप बहुत गंभीर हैं, बहुत एकनिष्ठ हैं भगवान को समझने के लिए, उनको शरणागत होने के लिए, तो भगवान का पहला इंस्टॉलमेंट जो कृपा का मिलेगा वो आपको प्रमाणिक गुरु आपके जीवन में भेजेंगे. And that way Krishna is helping inside and outside. और इस तरह से कृष्णा जो है भीतर से और बाहर से आपकी मदद करते हैं. Does that help you? क्या इससे Yes. आपकी मदद की? With one more question I have. You were reading from that Krishna book, and it was explained that if one wants to get out of Maya completely, then one has to take complete shelter of the bona fide spiritual master and have one-pointed attention. So, what will it take to be able to have that full shelter and To have fully what? full shelter of bona fide spiritual masters' lotus feet and one-pointed attention? Are you the translator? What will it take for someone to get? I understood the English, right? But do they understand the Hindi? प्रश्न ये है कि महाराज गुरुदेव कृष्ण मुख से पढ़ रहे थे कि वहाँ पे बोला गया कि माया से अगर पूरी तरह से हमें बाहर निकलना है तो हमें जो प्रमाणित गुरु हैं उनके चरण कमल का पूरी तरह से आश्रय लेना पड़ेगा और एक निष्ठावान होके वहाँ पे शरणागत करना पड़ेगा. तो मेरा प्रश्न था कि हम किस तरह से अप्रमाणित गुरु के चरण कमल के प्रति पूरी तरह से शरणागत हो सकते हैं और एक निष्ठावान हो सकते हैं. Without unflinching faith in Krishna and Guru, how can you 100% accept their instruction as absolute and make it your life and your soul and take shelter there? बिना अटूट श्रद्धा के गुरु और कृष्ण के निर्देश पे आप कैसे उनका शरण ग्रहण कर सकते हैं? Does that make sense? क्या इसका कोई मतलब बनता है? If we don't have faith in Krishna, अगर हमारा श्रद्धा नहीं है and कृष्ण we के don't ऊपर, have faith in Krishna's arrangement to meet bona fide Guru, और हमारे अंदर श्रद्धा नहीं है कृष्ण की व्यवस्था के ऊपर जिन्होंने हमारी don't व्यवस्था have की प्रमाणित गुरु faith देखने के लिए, in the instruction that Guru has given us from Krishna, और हमारे अंदर वो श्रद्धा नहीं है जो निर्देश दिए हैं गुरु ने, जो कृष्ण के माध्यम से आया है, then how can you take complete shelter at the lotus feet of the instructions of a bona fide spiritual master? तो कैसे आप पूरी तरह शरण ग्रहण कर सकते हैं उन निर्देशों का जो प्रमाणिक गुरु के माध्यम से आया? So without coming to soul platform and purified consciousness, it's not possible. बिना आत्मा के स्तर के आए बिना और इंद्रियों चेतना को शुद्ध किए बिना ये संभव नहीं है. To just try to understand and accept on falsico platform, mental platform, this is not real platform, this is material platform. इस चीज को समझना और मानसिक स्तर पे और मिथ्या अहंकार के स्तर पे ये संभव नहीं है. So therefore will not accept the instructions as absolute. इसीलिए हम जो निर्देशों को परम के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे. Therefore will not be able to put the necessary faith in those instructions. इसलिए हम आवश्यक श्रद्धा नहीं रख पाएंगे उन निर्देशों में. If we don't have faith in Krishna and the Guru, how can you have faith in the instruction? अगर आपको कृष्ण और गुरु में श्रद्धा नहीं है तो कैसे आप उनके निर्देश के ऊपर श्रद्धा रखेंगे? So if we're maintaining doubts, that means the demons of doubt. Krishna calls them demons. अगर हम अपनी शंकाओं को बनाए हुए हैं तो हम जो है असुरों को रखे हुए हैं और कृष्ण बताते हैं ये असुर के जैसे. So doubts means like a demon. शंकाओं का मतलब है असुर. So those doubts are coming from Maya. तो ये जो शंकाएं हैं, संदेह, ये माया से आती हैं. So if we are just simply listening to mental speculation, that's the sitting place of Maya, then Maya will just create all types of confusion and complexity and doubts. अगर हम बस बैठकर सरलता से माया को
अपने मनोधर्म को सुन रहे हैं, जो कि माया का स्थान है, माया के बैठने का स्थान है, हम बस सरलता से जटिलता को बढ़ा रहे हैं अपने अंदर और भ्रमित होते जा रहे हैं। So Krishna says, if you're not hearing me, if you cannot hear me, then you're lost. कृष्ण बताते हैं अगर आप मुझे सुन नहीं रहे हैं, मुझे सुन नहीं पा रहे हैं, तो आप भटकते जाएंगे। So then how can you put absolute faith in the instruction? तो कैसे आप अटूट श्रद्धा रख सकते हैं उस निर्देशों में? And especially when difficulties come, definitely difficulties will come. और खास करके जब मुश्किलें आएंगी, और मुश्किलें अवश्य आएंगी, Immediately Maya will say, oh, this is problem now, some problem, difficulty, obstacle is coming to you. How do you know this is really Krishna's instruction? तुरंत ही माया आपको कहेगी, ओ अभी कुछ समस्या आ रही है, तो कैसे समझोगे कि ये जो निर्देश तुमको मिले हैं कृष्णा से मिले हैं उन मुश्किलों में? Then if you're trying to understand it on intellectual, mental platform, you'll become very shaky. तो अगर आप उस परिस्थिति को अपनी बुद्धि और अपने मन से समझने का प्रयास करेंगे तो आप पूरी तरह से हिल जाएंगे, Because it's not the real faith. क्योंकि ये असल श्रद्धा नहीं है। Real faith and intelligence comes from Krishna. असल श्रद्धा और बुद्धि जो है भगवान से, कृष्ण से आती है। Internally, in Chaitya Guru Paramatma, भीतर से चैत्य गुरु परमात्मा के माध्यम से, and externally to bona fide spiritual master. और बाहर से प्रमाणिक आध्यात्मिक गुरु के माध्यम से, And to the Shastra, और शास्त्र के माध्यम which से, is non-different from Krishna. जो कृष्ण से अभिन्न है। So Krishna does not give us that type of intelligence and faith, तो कृष्ण अगर हमें इस तरह का बुद्धि और इस तरह का श्रद्धा नहीं देते हैं, then that means we have not taken shelter there. इसका मतलब हमने उसका शरण नहीं ग्रहण किया है। That means we're still in material consciousness, false ego platform, still inclined towards mental speculation and listening to Maya instead. इसका मतलब अभी भी हम मिथ्या अहंकार के स्तर पे हैं, मनोधर्म कर रहे हैं, भौतिक चेतना में हैं और माया में हैं। Then we'll be misguided. तो हम जो है गलत दिशा निर्देशित Then होंगे, we'll misunderstand everything. तो हम सभी चीज को गलत समझेंगे। That's where all the problem comes from. यहीं से सारी समस्या आती है। My Gurudev used to say, if you don't understand something, that's all right. मेरे गुरुदेव कहा करते थे, अगर आप कुछ नहीं समझ पाते हैं तो ठीक है, Because by mercy of Guru Krishna, they can help you to understand it. क्योंकि गुरु और कृष्ण की कृपा के माध्यम से वो आपकी मदद कर सकते हैं उसको समझने के लिए। But he said, if you misunderstand it, लेकिन वो कहते थे अगर आप गलत समझोगे, due to Maya's influence, माया के प्रभाव में आके, this will create great chaos and havoc in your life. आपके जीवन में पूरी तरह से हड़कंप मच जाएगा। This is trouble. ये समस्या है। We're hearing, हम सुन रहे हैं, we're surrendering. हम शरणागत कर रहे हैं, But who are we surrendering and hearing from is only question. लेकिन हम किससे श्रवण कर रहे हैं और किस पे शरणागत कर रहे हैं, यही एकमात्र सवाल है। Who's guiding us? कौन हमारा दिशा निर्देशन कर रहा है? And what is the result? और इसका क्या फल है? You judge the thing by the result as well. आप न्याय कर सकते हैं अपने आप को जिस तरह के फल मिल रहे हैं उसके माध्यम से भी। Prabhupada was speaking in University of Stockholm. प्रभुपाद जो है यूनिवर्सिटी स्टॉकहोम की यूनिवर्सिटी में बोल रहे हैं In September 1973. सितंबर 1973 में। And Srila Prabhupada, he says that everyone has a blazing fire within their heart. श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं सभी के अंदर जो है हृदय में एक अग्नि जली हुई है, And the blazing fire is anxiety. और ये जो अग्नि जली हुई है ये है चिंता। Another place Prabhupada said the material disease is anxiety, fear, disturbance. अरे एक और जगह तो प्रभुपाद बता रहे हैं ये जो भौतिक बीमारी है, ये चिंता है, ये भय है। So this blazing fire of anxiety is there within everyone's heart in material nature. ये जो दावाग्नि है सभी के अंदर है, सभी इस भौतिक प्रकृति में जो भी है उनके अंदर है। Always everyone has anxiety. हमेशा सभी को चिंता है, And no one is free from it. और कोई भी इससे मुक्त नहीं है। Now if we're smart enough, sensitive enough, conscious enough, we'll be able to understand this point. अगर हम बुद्धिमान हैं, अगर हमारे अंदर चेतना है, हम थोड़ी सी समझ है तो हम इसको समझ सकते हैं। If we're like animals, animal consciousness, very dull, low consciousness, we'll not be able to understand how every moment anxiety is burning like a fire within the heart. तो
अगर हम पशु की चेतना में हैं तो हम इस बात को नहीं समझ सकते कि प्रत्येक क्षण जो है हमारे अंदर कैसे ये चिंता हमारे अंदर है। So Prabhupada said, so if you want to be anxiety less, प्रभुपाद बता रहे हैं अगर आप चिंता मुक्त होना चाहते हैं then you must take shelter of the Guru, the spiritual master. तो आपको अवश्य शरण ग्रहण करनी चाहिए गुरु की, आध्यात्मिक गुरु की। And the test of the Guru और उस गुरु का परीक्षण है is that by following his instructions, you'll become free from anxiety. कि उनके निर्देशों का पालन करने के बाद आप पूरी तरह से चिंता से मुक्त हो जाएंगे। That's also a nice way to see. ये भी एक अच्छा तरीका है देखने का। So by following the instructions, whether you understand it or not, then all of your disturbance and anxiety, everything will become less. तो उनके निर्देशों का पालन करने के बाद आपके जितनी भी परेशानी हैं, जितनी चिंताएं हैं, धीरे धीरे कम हो जाएंगी। By the mercy of the spiritual master. आध्यात्मिक गुरु की कृपा से। The test of the Guru is that by following his instructions, you'll be free from anxiety. आध्यात्मिक गुरु का परीक्षण ये है कि आप उनके निर्देशों का पालन करने के बाद आप पूरी तरह से चिंता मुक्त हो जाएंगे। This is the test. ये परीक्षण है। Don't try to find a cheap guru एक सस्ता गुरु ढूंढने का प्रयास मत करो, or a fashionable guru. या बहुत ज़्यादा फैशनेबल गुरु। Just as sometimes you keep a dog as a fashion statement. जिस तरह से आप किसी कुत्ते को रख लेते हैं फैशन कथन के रूप में। If you want to keep a guru as a fashion and say, yes, I also have a guru, अगर आप गुरु को ऐसे फैशन के रूप में रखना चाहते हैं, आप भी कहेंगे हाँ मेरे पास भी गुरु है, that will not help you. ये आपकी मदद नहीं करेगा। You must accept a guru आपको अवश्य एक गुरु स्वीकार करना है who can extinguish the blazing fire of anxiety from within your heart. जो इस दावाग्नि आपके अंदर जो चिंता का है इसको पूरी तरह से बुझा सकता है। That is the test. ये परीक्षा है। We need that kind of guru हमें ऐसा गुरु who चाहिए can put out that fire of anxiety. जो इस चिंता के अग्नि को बुझा सकता है। Prabhupada said that is the first test of the guru. प्रभुपाद बताते हैं ये पहला परीक्षा है गुरु का। So when people don't want to accept the guru, it just means that they're not understanding that their heart is burning like a fire filled with so much disturbance and anxiety. अगर कोई गुरु का स्वीकार नहीं कर रहा है इसका मतलब वो पशु की चिंता में और वो समझ नहीं पा रहा है उसके अंदर ये चिंता का आग लगा हुआ है। And because we're not realizing that problem, then we'll not look for a solution. और क्योंकि हम इस परेशानी को साक्षात्कार नहीं कर पा रहे, अनुभव नहीं कर पा रहे, इसलिए हम समाधान भी नहीं ढूंढ रहे हैं। So first we must realize that the heart is every moment filled with burning fire of anxiety. We have to be conscious enough and intelligent enough to realize that. पहले हमें इस बात को समझना होगा कैसे हमारे हृदय में हमेशा ये आग लगी हुई है इस चिंता की। And then serious enough to try to extinguish that burning fire of anxiety. और इतना गंभीर, काफी गंभीर हो सके ताकि उस सब आग को बुझाने का प्रयास करें। Then you need a guru. तब आपको गुरु की आवश्यकता है। Prabhupada said, otherwise you're not serious. प्रभुपाद कहते हैं उसके वरना आप गंभीर नहीं हैं। You're acting as own guru. आप स्वयं के गुरु के रूप में काम कर रहे हैं। So when someone's acting as own guru, we always ask, are you happy with your results? अगर कोई स्वयं के गुरु के रूप में काम करता है तो मैं हमेशा उनसे सवाल पूछता हूँ क्या आप खुश हैं अपने सारे फलों से? Are you happy with the results of your being your own guru? क्या आप खुश हैं आप उन सारे फलों से, आप स्वयं के गुरु बनने के बाद? You're satisfied with those results? क्या आप संतुष्ट हैं उन सारे फलों से? Then let it be, no problem. तो ठीक है, रहने दीजिए, कोई समस्या नहीं है। But if you're not satisfied, लेकिन अगर आप संतुष्ट नहीं हैं and the burning fire of anxiety is too much to handle, to deal with, to tolerate, और ये जो अग्नि है चिंता की ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है और इसको आप सहन नहीं कर पा रहे हैं अब, means no peace. इसका मतलब कोई शांति नहीं है। No peace means no happiness. कोई शांति इसका मतलब कोई सुख नहीं है। So if you're happy with no peace and no happiness, अगर आप संतुष्ट हैं, अगर आप खुश हैं बिना किसी शांति के, बिना and you're किसी सुख के, satisfied with those results of your being your own guru, और अगर आप संतुष्ट हैं उन सारे फलों से अपने स्वयं के गुरु बनने से, then what to say? तो फिर क्या कह सकते हैं? Why do you think all this psychology and psychiatrists, right? Why do you think it's billions dollar business? आपको
क्यों ऐसा लगता है कि ये जो सारे मनोवैज्ञानिक है, साइकेट्रिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, ये इनके पास करोड़ों करोड़ रुपए हैं, क्यों ऐसा है? Why do you think all of these different drugs, right, including alcohol, right? Why is this billions and billions of dollars of business? Everybody trying to deal with anxiety. आपको क्यों ऐसा लगता है कि ये जो नशा का और ये शराब का जो धंधा है, सबसे करोड़ों का व्यापार है? There's so many anxiety medication. बहुत तरह से चिंता को मुक्त करने के बहुत सारी दवाइयाँ हैं। This will help with your anxiety. It will stop your panic attacks. ये आपकी चिंता को मुक्त करेगा, आपको जो ये दर्द के झटके लग रहे हैं, इससे आपको मुक्त करेगा। Or here's some more medication will pull you out of your depression and wanting to kill yourself. ये कुछ दवाइयाँ हैं जो आपको मदद करेगा आपके उदासी से बाहर आने के लिए, और अगर आप स्वयं को मार डालना चाहते हैं उससे बचाने के लिए। Sometimes I ask the devotee, what do you like better, anxiety or depression? कभी-कभी मैं भक्तों से पूछता हूँ, तुमको क्या ज़्यादा पसंद है, चिंता या उदासी? Which one do you prefer? क्या आप चुनना चाहेंगे? So when you get so tired by anxiety, then you just give up and you go into the depression. जब आप पूरी तरह से थक जाते हैं तो आप चिंता से तो आप चले जाते हैं उदासी में। Because you just lose all hope. What's the sense? Who cares? You know, better I die. क्योंकि आप सारी उम्मीद खो देते हो, क्या फर्क पड़ता है, इससे बेहतर है कि मैं मर जाऊँ। And then when that depression becomes really horrible, then you say, I'd rather be in anxiety. At least I'm active. You know. और फिर जब आप उस उदासी से पूरी तरह से भयभीत हो जाते हैं, बहुत भयावह परिस्थिति आ जाती है, तो आप सोचते हैं बेहतर है कि मैं चिंता वाली परिस्थिति में जाऊँ, कम से कम मैं काम तो कर रहा हूँ। Is that any way to live? Shifting from anxiety to depression? क्या ये कोई तरीका है रहने का कि आप एक बार चिंता में जाए फिर उदासी में जाए? No peace, no happiness. कोई शांति नहीं, कोई सुख नहीं। Was satisfied with that result? क्या आप संतुष्ट हैं इस तरह के फलों से? Prabhupada said every moment your heart is burning with anxiety. प्रभुपाद बताते हैं प्रत्येक क्षण आपका हृदय जल रहा है चिंता से। Every moment that we are not Krishna conscious means complete anxiety, fear and anxiety. प्रत्येक क्षण जब हम कृष्ण भावनामृत नहीं है, इसका मतलब पूरी तरह से चिंता है, पूरी तरह से भय है। So we like that result, then it will stay like that. अगर हम ऐसा फल हमें पसंद है तो हम ऐसा ही रह सकते हैं। If we're smart and intelligent, wise, we'll think, okay, how do I get out of this situation? अगर हम बुद्धिमान हैं, अगर हम समझदार हैं, तो हम प्रयास करें कैसे हम इस परिस्थिति से बाहर आ सकते हैं। And Krishna said, then you just surrender to me, means you surrender to bona fide spiritual master, my representative, then he'll get you out of your fear and anxiety situation. कृष्ण बताते हैं आप मुझ पर शरणागत कीजिए, मेरे प्रामाणिक प्रतिनिधि को शरणागत कीजिए, तो मैं आपको मुक्त करूंगा इन चिंताओं और इन भयों से। That's what it means. Bona fide guru gives you shelter and protection. इसलिए कहते हैं प्रमाणिक गुरु आपको जो है रक्षण और आपको संरक्षण देंगे from uncontrolled mind and senses. इस अनियंत्रित मन और इंद्रिय से। So, do you want shelter and protection from uncontrolled mind and senses? तो आपको क्या शरण और रक्षण चाहिए अनियंत्रित मन और इंद्रिय से? Then we need a bona fide guru. तो हमें प्रमाणिक गुरु चाहिए। That's the only solution, only way to get out of it. यही एकमात्र समाधान है, एकमात्र तरीका है इससे बाहर आने का। That's what Krishna says. ये कृष्ण कहते हैं। That's what Guru Sadhu and Shastra says. ये गुरु साधु और शास्त्र कहते हैं। Another question? किसी को कोई सवाल? Anything? Any subject? किसी भी विषय? Yes, microphone you're on? Yeah. Let him go first and then you're after him. Now everybody's trying to figure out, now I want to get rid of this anxiety problem. अब सब ये सोच रहे हैं कि अब मुझे इस चिंता वाली समस्या से बाहर निकलना चाहिए। This is called good intelligence. इसको कहते हैं अच्छी बुद्धि। Good buddhi. Buddhi yoga. अच्छी बुद्धि, बुद्धि योग। So you're saying that we have to have unflinching, execute the instruction with unflinching faith on soul platform. That's the Nishta platform. Yeah, Krishna's on the soul platform. कृष्ण आत्मा के स्तर पे है। So if you can't hear Krishna on soul platform, how will you have spiritual faith and intelligence? अगर आप कृष्ण को नहीं सुन पा रहे हैं आत्मा के स्तर पे, तो कैसे आपको आध्यात्मिक बुद्धि और श्रद्धा मिलेगी?
That's what you're asking, right? ये आप पूछ रहे हैं Well, लेकिन so if that's required, but when we approach the bona fide spiritual master and when we take initiation, we're on Bhajana Kriya, so we still have all these anarthas that are preventing us from being on the soul platform, but we still have to execute the instruction and follow, and surrender. And so how are we able to do that at that level? When it's required to be on the soul platform. So how we get instruction, we're still beginning. Yes, Krishna will tell you. You understand this? So हम प्रमाणिक गुरु के पास जब आते हैं हम उनसे दीक्षा लेते हैं और वो हमें कुछ निर्देश देते हैं और हम भजन क्रिया में हमें युक्त करते हैं, लेकिन हमारे पास अभी भी बहुत सारी समस्याएं हैं, हमारे अंदर बहुत सारी कमियां हैं। तो हम जब उन निर्देशों का पालन करने का प्रयास, तो हम कैसे इसको कर पाएंगे, कैसे हम शरणागत कर पाएंगे? So Krishna, he'll give you spiritual, transcendental intelligence and faith who to accept as spiritual master, who he will use to help you to purify yourself from all of the different types of contamination. Where to go, where to surrender in order to solve all the rest of the problem. तो कृष्ण आपको दिशा निर्देशित करेंगे कि आपको किस व्यक्ति के पास जाना चाहिए, जो आपकी सारी समस्याओं का समाधान करने के लिए आपकी मदद करेगा, आपके मन और इंद्रियों को शुद्ध करेगा और आपको सही दिशा निर्देश देगा और आपको दिव्य बुद्धि और दिव्य श्रद्धा देगा। First mercy is Krishna's mercy. पहला कृपा कृष्ण का कृपा है। So you must have sufficient faith. तो आपको आवश्यक In फेथ, Krishna. आपसे श्रद्धा होना चाहिए कृष्ण के ऊपर। Krishna says, I'm in the heart of every living entity. From me comes knowledge, remembrance, forgetfulness. कृष्ण कहते हैं मैं सभी जीवात्माओं के हृदय में है, मुझसे स्मरण शक्ति, ज्ञान और ये चीजें आती हैं। So if we are sincerely crying before God, crying before Krishna, then He definitely will give you intelligence and faith where you should surrender, अगर आप एकनिष्ठ होकर who you should surrender to. अगर आप एकनिष्ठ होकर क्रंदन कर रहे हैं कृष्ण के सामने, तो कृष्ण आपको बुद्धि देंगे और श्रद्धा देंगे, आपको किसके पास जाकर शरणागत करना चाहिए, किसके पास आपको जाना चाहिए। Prabhupada said that once you're sincere and serious for wanting to surrender to Krishna and become devotee of Krishna, then Krishna will make an arrangement to meet bona fide Guru, and then he, the Super Soul Paramatma, Krishna, will dictate to you that you should accept this person as your spiritual master. और जब आप एकनिष्ठ और गंभीर होंगे कृष्ण को शरणागत करने के लिए, तो कृष्ण आपको और जब आप उस प्रमाणिक गुरु से मिल पाएंगे, तो कृष्ण परमात्मा के रूप में आपको सीधे सीधे बताएंगे कि ये आपके प्रमाणिक आध्यात्मिक गुरु हैं। Then you go there, and then you go through the process of purification to get rid of all of these other contaminations. और तब आप उनके पास जाएंगे, उनके पास शरणागत करेंगे, वो आपकी मदद करेंगे इन सारे भौतिक प्रदूषण से मुक्त होने के लिए। What is difficulty? क्या समस्या है? So at that point, at that stage, we're able to put unflinching faith at that point. If Krishna gives you intelligence and faith, that means it will be unflinching. So that's on soul platform. Huh? But then that's on soul platform. On the what? On the soul platform. Unflinching faith means super soul, Paramatma, Chaitya Guru to your soul. अटूट श्रद्धा का मतलब है परमात्मा चैत्य गुरु सीधे सीधे आपकी आत्मा को। He'll give you that intelligence and faith on soul platform. वो आपको आपकी वो बुद्धि और श्रद्धा देंगे आत्मा के स्तर पे। If we are sincere and serious to want to fully surrender to Krishna. अगर हम पूरी तरह से गंभीर और एकनिष्ठ हैं, पूरी तरह कृष्ण को शरणागत करने के लिए। So sincerity and seriousness to surrender to Krishna, that is prerequisite. गंभीरता और एकनिष्ठता ये पहली आवश्यकता है भगवान को शरणागत करने के लिए। In order to get Krishna's causeless mercy to give us that type of transcendental intelligence and faith on the soul platform. ताकि कृष्ण अपनी अहेतु की कृपा से हमें उस तरह का दिव्य बुद्धि और दिव्य श्रद्धा दे सके उस दिव्य स्तर पे। So how sincere and serious are we
for wanting to surrender to Krishna, that's only question. तो हम कितने गंभीर और कितने एकनिष्ठ हैं कृष्ण को शरणागत करने के लिए, यही एकमात्र सवाल है। That's the problem. यही समस्या है। The problem is not from Krishna's side. कृष्ण की तरफ से कोई समस्या नहीं है। In one moment he can explain everything to us. एक क्षण में वो हमें सब कुछ समझा सकते हैं, But we've not qualified ourselves. लेकिन हमने स्वयं को योग्य नहीं बनाया है। We're not being so simple, हम उतने सरल we're नहीं बन not रहे being हैं, so sincere, so innocent. हम उतने एकनिष्ठ और उतने We're not being नहीं। very eager. बहुत ज़्यादा उत्सुक नहीं है, Then we're cheating. तो हम ठग रहे हैं, Therefore we're getting cheated. इसलिए हमें ठगा जा रहा है। If we're cheating, then we'll only hear mental speculation, Maya through your mental speculation. अगर हम ठग रहे हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ माया को सुनेंगे, अपने मनोधर्म को सुनेंगे। That means by your question that Krishna has not convinced you on soul platform. इसका मतलब आपके सवाल से ये लग रहा है कि कृष्ण ने आपको आश्वस्त नहीं किया है आत्मा के स्तर पे। Because then you would understand the difference. तब आप जो है अंतर को समझ पाएंगे। Do you understand the difference? आप समझ पा रहे हैं अंतर को? That means Krishna not convinced you yet. इसका मतलब कृष्ण ने अभी तक आपको आश्वस्त नहीं किया है। Why? क्यों? Because we're speculating and we're listening to Maya. क्योंकि हम मनोधर्म कर रहे हैं और माया को सुन रहे हैं। And Maya is saying, be careful, माया कह go रही है, slow, you might get cheated. माया कह रही है कि सावधान हो जाओ, धीरे जाओ। Then what will happen to your material life? तुम्हारे भौतिक जीवन का क्या होगा? Then you won't make it spiritually. आध्यात्मिक रूप से भी तुम नहीं कर पाओगे। And you already gave up your material life, then what will happen to you? और तुमने अपना पहले भौतिक जीवन छोड़ दिया है, अब क्या होगा तुम्हारे जीवन का? Then you'll have nothing. अब तुम्हारे पास कुछ Do भी you नहीं really होगा। want to surrender to Krishna? क्या तुम असल में भगवान को शरणागत करना चाहते हो? Even Maya will say, do you really think that Krishna is a blue cowherd boy who plays on the flute? माया यहाँ तक ये भी कहेगी कि तुमको लगता है कृष्ण कोई नीले रंग का लड़का है जो बांसुरी बजाता है और गाय चलाता है। This is the absolute truth. God is a blue cowherd boy who plays on the flute. ये परम सत्य है कि भगवान जो एक नीले लड़के हैं जो बांसुरी बजाते हैं। Maya will say, really? Are you sure about that? तो माया बोलेगी क्या अवश्य तुमको ऐसा लगता है कि ये ऐसा है? And we're listening to them. और हम उसको सुनते हैं। So we're not listening to Krishna. हम कृष्ण को नहीं सुन रहे हैं। We're not asking Krishna, please allow me intelligence and faith to understand you and to accept you. हम कृष्ण को नहीं पूछ रहे, कृपया मुझे अनुमति दीजिए आपको समझने के लिए, मुझे शक्ति, मुझे बुद्धि दीजिए, मुझे श्रद्धा दीजिए आपको समझने के लिए, So that I can surrender to you. ताकि मैं आपको शरणागत कर सकूं। So we have a lack of sincerity and seriousness तो हमारे अंदर कमी है एक निष्ठता और गंभीरता का, to really want to understand Krishna and surrender to Krishna. ताकि हम कृष्ण को असल में समझ सकें और उनको शरणागत कर सकें। That's the problem. ये समस्या है। That's the root of every other problem. यही सारी समस्याओं का जड़ है। So two people have to be convinced, you and Krishna. दो ही लोगों को आश्वस्त करना है, आपको और कृष्ण को। Are you convinced? क्या आप आश्वस्त हैं? Maybe that's why Krishna is not convincing you. हो सकता है इसीलिए कृष्ण ने आपको आश्वस्त नहीं किया है। Then all you know is the material bodily platform, false ego platform, and that's where Maya is sitting and playing and whispering in your ear. तो सिर्फ आप यही जानते हैं माया और इस भौतिक स्तर को जानते हैं और जहाँ पे माया आपके साथ खेल खेल रही है। So who are you listening to? तो आप किसको सुन रहे हैं? What is the source of that intelligence इस बुद्धि का स्रोत क्या है? and feelings and emotion and plans? What is the source? Is it Krishna or is it Maya? इस अनुभव, इस भावनाओं का स्रोत क्या है? ये किससे आ रहा है? कृष्ण से आ रहा है? This is very deep question. ये बहुत ही गहरा सवाल है। This is for serious people. ये गंभीर व्यक्तियों के लिए है। This is not for foolish people or childish people. ये मूर्ख व्यक्तियों और बचपने व्यक्तियों के लिए नहीं है। This is for like the grown-ups. ये बड़े लोगों के लिए है।
Did you get your answer? क्या आपको आपका सवाल मिला, जवाब मिला? So why don't you just try to convince yourself and Krishna that you want to sincerely surrender and serve him? तो क्यों नहीं आप स्वयं को आश्वस्त करने का प्रयास करें और कृष्ण को आश्वस्त करने का प्रयास करें कि आप उनको शरणागत करना चाहते हैं, उनकी सेवा करना चाहते हैं? That's the first work you have to do. ये पहला काम है जो आपको करना है. Then worry about who is guru, what is guru, every other tattva after that. Then you can worry about that afterwards. तब आप चिंता कर सकते हैं कौन गुरु है, कौन क्या है, तब किसी और तत्वों पे आप चिंता कर सकते हैं. That's the first instruction. That's the first work you have to do. ये पहला निर्देश, ये पहला काम है जो आपको करना है. Search for Krishna in your heart. कृष्ण को ढूंढो अपने हृदय में. Prabhupada says you don't have to go any further than your own heart to find the Supreme Lord. प्रभुपाद बताते हैं आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं है कृष्ण को ढूंढने के लिए, बजाय आपके हृदय में. Everybody's running around. Oh, this temple, that temple. I need to darshan, this, that, and God is closer to our soul than we even realize. सभी लोग एक मंदिर दूसरे मंदिर भाग रहे हैं, यहाँ दर्शन लेना है, वहाँ दर्शन लेना है, लेकिन भगवान आपके सबसे ज्यादा नजदीक आपके हृदय में है. We're going to Tirupati and we're waiting in the line for hours and hours and hours, right? हम तिरुपति में जा रहे हैं, वहाँ लाइन में लगे हैं, घंटों घंटों लाइन में ही बस खड़े हैं. Right? And God He's sitting so close to our soul we can't even understand it. और भगवान हमारे हृदय में सब इतने ज्यादा नजदीक हैं और हम उसको समझ भी नहीं सकते. And then we're not even turning to Him. और हम उनके तरफ मुड़ भी नहीं रहे हैं. We're putting faith in और Him. उनको श्रद्धा भी नहीं रख रहे हैं. We're asking Him. या उनको पूछ We भी have नहीं रहे हैं. relationship with Him. We're trying to hear from Him. या उनसे श्रवण भी नहीं कर रहे हैं. And then we're trying to understand what is spiritual life. Where is God? Who is God? और हम समझने का प्रयास करें कि आध्यात्मिक जीवन क्या है, भगवान कौन है, भगवान क्या है. So do the internal work. तो पहले ये भीतरी काम करने का प्रयास करो. Try to find God in your own heart. भगवान को Try to see how Krishna is there. ढूंढने का प्रयास करो कि कैसे कृष्ण वहाँ पे हैं. And convince Krishna, convince yourself and Krishna that you really want to surrender to Him somehow or other. आश्वस्त करने का प्रयास करो कृष्ण को और स्वयं को कि वो आप उनको शरणागत करना चाहते हो, उनकी सेवा करना चाहते हो किसी तरीके से. And if we don't do that, then everything else we're talking about is useless, waste of time. और अगर हम ये नहीं कर रहे हैं, उसके अलावा हम कोई भी और बात कर रहे हैं, पूरी तरह से बेकार है, पूरी तरह समय की बर्बादी है. Because without Krishna's mercy, His intelligence and faith, we cannot understand any other thing. क्योंकि कृष्ण की कृपा के बिना, बुद्धि और श्रद्धा के बिना हम कोई भी और चीज नहीं समझ सकते हैं. We'll just be lost in the mental speculation, हम पूरी तरह से भटक जाएंगे इस मनोधर्म में, which is controlled by Maya. जो पूरी तरह से माया के नियंत्रण में है. Then she'll always misguide you, tell you opposite thing. वो हमेशा आपको दिशा भ्रमित करेगी और आपको हमेशा उल्टा चीज बताएगी. All right, that's your work now. That's your homework assignment. ठीक है, ये आपका, I'm like a teacher. I'm giving you homework assignment. तो ये अब आपका गृह कार्य है. अब ये मैं एक शिक्षक के जैसा हूँ, मैंने आपको गृह कार्य दिया है, आपको ये करना है. So you have to pass the first assignment. Then we can go to the next teaching. तो आपको ये पहला असाइनमेंट पूरा करना है, इसके बाद हम अगले शिक्षा में जाएंगे. First, try to understand what is Adau Shraddha. पहले ये समझने का प्रयास करो अदाउ श्रद्धा क्या है. Shraddha means Shraddha. श्रद्धा का मतलब है श्रद्धा. Maybe beginning Shraddha, but it's real Shraddha. हो सकता है शुरुआती श्रद्धा, लेकिन असल श्रद्धा. All right? ठीक है. Otherwise, what else are you going to figure out? वरना आप और क्या पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं. Everything else will be bewildering, confusing. सब कुछ जो है भ्रमित कर देगा पूरी तरह से. Because you'll just be going to Maya in your mind trying to understand everything. क्योंकि आप बस अपने मन में माया के पास जा रहे हैं सब कुछ समझने के लिए. And Maya will say, yes, I'll answer all of your questions. और माया कहती है हाँ मैं तुम्हारे सारे सवालों का You जवाब just दूंगी. need some space, आपको बस थोड़ा जगह चाहिए, some privacy. कुछ एकांत चाहिए थोड़ा. That way we can figure all of these things out. इस तरीके से हम सारी चीजों का पता लगा लेंगे. Otherwise, too confusing with all of these devotees, you know. और नहीं भक्तों के साथ रहकर मैं बहुत भटक जाता हूँ. They were like, okay, Maya, I'm alone, so what should I know? और फिर हम अकेले में चले जाते हैं, माया को कहते हैं कि अब मैं क्या करूँ. Oh, you're alone, you know, just go enjoy your life, you know. What is all this surrender to Krishna business?
वो कहती है क्या ये कृष्णा को शरणागत होने का ये है, अपने जीवन को आनंद भोगो, Just go enjoy your life. जाओ और आनंद भोगो। Why are you bothering your head? क्यों अपना सर लगा रहे हो इतना? Oh, really? Is that a good idea? वो क्या सच में अच्छा विचार है? And I'll be really peaceful and happy? Of course, of course. क्या हम असल में शांत और सुख हो पाएंगे? कहेंगे हाँ जरूर हो पाओगे। And I won't suffer and get heavy lashes? No. और क्या मैं दुख नहीं लूँगा, मुझे कड़ा प्रहार नहीं मिलेगा? You're too smart for that. नहीं, तुम उसके लिए बहुत समझदार हो। We're going to do it differently this time. हम इस बार अलग तरीके से करेंगे। Sure? Absolutely. हाँ अवश्य। So Maya is going to be your guru? तो क्या माया आपकी गुरु है? And deliver all the good information to your contaminated mind and senses? और सारी वो चीजें आपके सामने रखेगी, आपके दूषित मन और इंद्रिय के माध्यम से आपको ये सारी Perfect knowledge from perfect source? पूर्ण ज्ञान पूर्ण स्रोत से। That's what you're going to trust? क्या आप उस पर भरोसा करेंगे? Why do you have so much faith in Maya and no faith in Krishna? आपको क्यों माया के अंदर इतना श्रद्धा है, कृष्णा के ऊपर श्रद्धा नहीं है? Why do you put so much faith in your so-called intelligence and mental speculation? क्यों आप इतना श्रद्धा रखते हैं इस नाम मात्र के बुद्धि में और अपने मनोधर्म में? Why are you so concerned with your feelings and emotions and material consciousness? क्यों आप इतना चिंतित है अपनी इस भावनाओं में और इस भौतिक चेतना में? One smart person, one time they said to me, feelings are not facts. एक बुद्धिमान व्यक्ति ने मुझे एक बार कहा कि भावनाएं जो हैं तथ्य नहीं है। Very wise statement. बहुत ही समझदार कथन है। No, I'm feeling this way. Emotionally, I'm like this. I'm feeling like that. और नहीं, मैं ऐसा अनुभव कर रहा हूँ, मेरे भावनाएं ऐसा आ रही हैं। It has to be true. अवश्य सत्य होगा। Prabhupada said, just like a dream, right? In a dream, you're getting eaten by a lion. You wake up sweating in complete anxiety. जिस तरह प्रभुपाद बताते हैं कि स्वप्न में आप देखते हैं कि शेर आपको खा रहा है और पूरी तरह से आप पसीने में सपने से फिर उठते हैं। Definitely you're feeling emotion and fear and all disturbance, but it's just a dream. It has no reality. अवश्य आपका अनुभव है, आपका भय है, आपका ऐसा अनुभव होता है, लेकिन ये सत्य नहीं होता। So those feelings and emotions that we're putting so much focus on and attention to is just an illusion. It's just a dream. ये सब जितनी हमारे अनुभव हैं और जो हम महसूस कर रहे हैं, ये भावनाएं हैं, ये सत्य नहीं है, ये बस एक स्वप्न की तरह है। But Maya is making it appear to be very real, very significant thing. लेकिन माया इसको दिखा रही है पूरे सत्य की तरह, बहुत ही आवश्यक चीजों के रूप में। And we're listening to them. और हम इसको सुन रहे हैं। You also have a question? क्या आपका भी सवाल है? Yeah. Yes. Hare Krishna Maharaj. Yesterday you were talking about the dysfunctional relationship we have with Maya. The function. Yesterday, you were talking about the dysfunctional relationship we have with Maya. Yes. So my question is, if this relationship is so harmful, so painful, why we cannot give up to this relationship just in a moment? That's a very good question. बहुत ही अच्छा सवाल है। प्रभु पूछ रहे हैं कि अगर ये सारी हमारी संबंध हैं, जो भौतिक संबंध हैं, ये पूरी तरह बेकार हैं, तो हम इनके प्रति इतना आसक्त क्यों होते हैं, हम इनको छोड़ क्यों नहीं पाते? तो गुरुदेव बता रहे हैं, बहुत ही समझदार सवाल है। We have knowledge that it's killing us and source of our suffering. हमें ज्ञान है कि ये हमें मार रहा है और हमारे सारे दुखों का स्रोत है। But we do not have sufficient strength and intelligence how to get out of it. लेकिन हमारे पास इतनी शक्ति और इतना बुद्धि नहीं है इससे हम बाहर आ सकें। So without merciful strength and intelligence from Guru and Krishna, it's impossible to get out of Maya. It's impossible to get free from your suffering condition. तो बिना कृपा शक्ति के और बुद्धि के, कृष्ण और गुरु के, हम माया से मुक्त नहीं हो सकते और इन दुखमय परिस्थिति से बाहर नहीं आ सकते हैं। Is that right? Yeah. You understand? आप समझ पा रहे हैं? You know it's killing you. You know it's the source of your suffering. Why we not give it up?
आप जान रहे हैं ये आपको मार रहा है, आपके सारे दुखों का स्रोत है, लेकिन आप फिर भी क्यों इसको नहीं छोड़ पा रहे हैं? Why we have so much faith in it? क्यों हमें अभी इसमें इतनी श्रद्धा है? Maya has seriously bewildered us, isn't it? माया हमें गंभीर रूप से भ्रमित कर रही है, Promising us happiness and delivering suffering. वादा कर रही है हमें सुख का और हमें दुख पहुंचा रही है। Little bit of pleasure, unlimited suffering. थोड़ा सा सुख और असीमित दुख। So I guess when we're sick and tired of being sick and tired, then we'll come up with a different strategy. तो मुझे उम्मीद है जब हम पूरी तरह से थक जाएंगे, पूरी तरह से थक जाने का और बीमार होने पे होकर, तो हम समाधान ढूंढेंगे। You don't like that Maya is your guru? Are you complaining about that? क्या आपको पसंद नहीं आ रहा है कि आप माया आपकी गुरु है, आप उसका शिकायत कर रहे हैं? She's not being nice to you? क्या वो आपके साथ अच्छा बर्ताव नहीं कर रही है? She's like a wicked taskmaster, वो पागल putting heavy lashes on you. आपसे कार्य करवा रही है, आपके पूरी तरह से प्रहार कर रही है, आपके ऊपर कड़ा प्रहार कर रही है। No peace, no relief, कोई शांति नहीं, कोई राहत नहीं, no happiness. कोई सुख नहीं। Why are you surrendering to such a guru क्यों आप शरणागत कर रहे हैं ऐसे गुरु को, who keeps you in complete anxiety day and night? जो पूरी तरह आपको चिंताग्रस्त रखता है And दिन और life is रात? completely chaotic, chaos, आपका जीवन पूरी तरह से हलचल मचा हुआ है, uncontrolled mind and senses. अनियंत्रित मन और इंद्रिय। Why do we stay in such a situation? क्यों हम ऐसी परिस्थिति में रहते हैं? It's insanity. It's insane. Insanity. ये पागलपन है, Temporary insanity. थोड़े समय के लिए पागलपन। We're condemned by the material nature of our concept. बात बताते हैं हम पूरी तरह से हम भौतिक प्रकृति के वश में हैं। You understand? समझ पा रहे हैं? So you like the results you're getting, being the servant Maya Das, being Maya Das? You like the results? It's good, very nice. क्या आपको पसंद आ रहा है जो आपको फल मिल रहा है मायादास बनकर, माया की सेवा करके? Nothing better to do with your time? कोई आपको अच्छा चीज नहीं मिल रहा है आपके समय को इस्तेमाल करने के लिए? You're satisfied with your results? क्या आप संतुष्ट हैं अपने फलों से? No? नहीं। You like it? क्या आपको पसंद है? You like your heart burning in anxiety day and night? Does that feel nice? क्या आपको पसंद है आपका हृदय जो है दिन और रात जल रहा है पूरी तरह चिंता से? क्या आपको पसंद है? Complete disturbance? और पूरी तरह से आप परेशान हैं, Complete uncertainty? पूरी तरह से अनिश्चितता है। Prabhupada say conditioned soul doesn't know what to do and what not to do. प्रभुपाद बताते हैं बद्ध जीवात्मा को नहीं पता है क्या करना है और क्या नहीं करना। So you like that arrangement? It's working very nicely? क्या आपको ये व्यवस्था पसंद है? क्या ये बहुत अच्छे तरीके से कार्य कर रहा है? Prabhupada is saying in Bhagavad Gita 10.3 purport, प्रभुपाद बता रहे हैं भगवद गीता 10वें अध्याय के 3रे श्लोक के तात्पर्य में, anything that's done under the direction of Krishna, that is transcendental. जो भी कृष्णा के दिशा निर्देशन में किया जाता है वो है दिव्य, And it cannot be contaminated by any material reactions. और किसी भी तरह के भौतिक प्रतिक्रिया से दूषित नहीं किया जा सकता, Which may be auspicious or inauspicious. जो पुण्य या अपुण्य हो सकता है। So this conception that there are things that are auspicious and inauspicious in the material world, तो ये जो बातें हैं, जो पुण्य और पाप, ये जो चीजें हैं, is more or less a mental concoction. ये कम या ज्यादा मनोधर्म है, Because there is nothing auspicious in the material world. क्योंकि भौतिक जगत में कुछ भी शुभ नहीं है। So short of being Krishna conscious, do you think that there's anything really auspicious in the material world? क्या कृष्ण भावना मृत हुए बिना आपको लगता है इस भौतिक जगत में कुछ भी शुभ है?
Prabhupada says nothing is auspicious in the material world. प्रभुपाद बताते हैं कुछ भी शुभ नहीं है भौतिक जगत So if में। we're servant of Maya, nothing is auspicious. अगर हम माया के दास हैं तो कुछ भी शुभ नहीं You है। cannot expect any auspiciousness. आप कुछ भी शुभ नहीं उम्मीद रख सकते हैं। Prabhupada says everything is inauspicious because the very material nature is in itself inauspicious. प्रभुपाद बताते हैं सभी कुछ यहाँ अशुभ है क्योंकि ये जो भौतिक जगत है ये स्वयं ही अशुभ है। So if we're in material consciousness and we are listening to Maya, the whole thing is faulty and inauspicious. How can you expect an auspicious result? तो हम माया को सुन रहे हैं और भौतिक चेतना में है और सब कुछ अशुभ है यहाँ पर। You understand? So if we are in material consciousness अगर हम भौतिक चेतना में हैं and we're depending on Maya, और हम माया के ऊपर निर्भर हैं the whole thing is inauspicious. तो पूरा सब कुछ ही अशुभ है। The beginning, the middle, and the end is inauspicious. शुरुआत मध्य और अंत सब The कुछ whole अशुभ है, thing is faulty. सब कुछ गलत है। So how can we expect an auspicious result? तो कैसे हम शुभ फल यहाँ पर उम्मीद रख सकते हैं? Everything is inauspicious because the very material nature is inauspicious. सब कुछ अशुभ है यहाँ क्योंकि ये जो भौतिक प्रकृति स्वयं ही अशुभ है। We're simply imagining it to be auspicious. हम बस कल्पना कर रहे हैं कि यहाँ शुभ है सब कुछ। So Maya's through creative imagination is saying this will be very auspicious for you. तो माया इस बनावटी कल्पना से आपको बता रही है कि यहाँ बहुत शुभ है। But real auspiciousness depends on activities in Krishna consciousness in full devotion and service. असल शुभ जो है कृष्ण भावनामृत में, कृष्ण भावनामृत कार्यों में है। So if we at all want our activities to be auspicious, अगर हम चाहते हैं किसी तरह हमारी जो गतिविधि है वो शुभ हो, then we should agree to work under the direction of the Supreme Lord, not Maya. तो हमें सहमत होना होगा भगवान के निर्देशों को स्वीकार करने के लिए, माया के निर्देशों को नहीं। And such directions are given in authoritative scriptures such as Srimad Bhagavatam and Bhagavad Gita. और ये निर्देश जो है हमारे शास्त्रों में दिए हुए हैं, श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् भगवद गीता में, or from bona fide spiritual master. या प्रमाणिक आध्यात्मिक गुरु से। Because bona fide spiritual master is the representative of the Supreme Lord, क्योंकि प्रमाणिक आध्यात्मिक गुरु प्रतिनिधि हैं भगवान के, then his direction और उनके निर्देश is directly the direction of the Supreme Lord. सीधे सीधे निर्देश है परम भगवान के। That faith we must have. Otherwise, how do you make that instruction your life and your soul? Sanatana. ये श्रद्धा हमें अवश्य होनी है, वरना कैसे हम अपने जीवन का सार बनाएंगे उनके निर्देशों को सनातन। That is real auspiciousness, real intelligence, which comes from Krishna, Krishna's devotees, and the Shastra. ये असल शुभ है, बुद्धि है, श्रद्धा है जो कृष्ण के भक्त से आती है, शास्त्र से आती है। Prabhupada says nothing should be accepted blindly. प्रभुपाद कहते हैं कुछ भी जो है अंधविश्वास में नहीं स्वीकार करना है। Everything should be accepted with care. सभी कुछ स्वीकार करना है and with caution. और सावधानी पूर्वक। So if we accept, understand, learn how to hear from Krishna, Sadhu, Guru, Vaishnava, then you can do it carefully and under caution because you're hearing from right source. और जब आप श्रवण करते हैं कृष्ण से, कृष्ण के भक्त से, तो तब आप इसको सावधानी पूर्वक कर सकते हैं क्योंकि आपने श्रवण किया है। That is proper use of caution. ये सही इस्तेमाल है सावधानी का। Caution means to make sure that you're hearing from bona fide authorized source and not from Maya. That's where our caution should be. सावधानी का मतलब हम श्रवण कर रहे हैं प्रमाणिक आध्यात्मिक गुरु से, माया से नहीं। ये है सही इस्तेमाल सावधानी का। It doesn't mean be cautious hearing the absolute truth from bona fide source. इसका मतलब ये इस बात पे सावधान नहीं होना परम सत्य को श्रवण प्रमाणिक आध्यात्मिक गुरु से।
Anyone else has a question? किसी का कोई और सवाल? किसी का? Hare Krishna. How does Krishna dictates that this is the real Guru? What is the process? What is it? He says, how will Krishna dictate that this is the proper Guru? This is the real Guru for you. He'll tell you. Is it in the dreams it comes? वो आपको बताएंगे. Directly from Super Soul, Paramatma, Chaitya Guru to your soul. सीधे सीधे परमात्मा चैत्य गुरु सीधे सीधे आपकी आत्मा को बताएंगे. तो प्रभु ये सवाल पूछ रहे हैं कि If you ask him, अगर आप उनको पूछेंगे कृष्ण, if you have enough faith in Krishna in your heart, and you pray to him and ask him 100% instruction, yes or no, Krishna will tell you. अगर आपके अंदर पर्याप्त श्रद्धा है कृष्णा के ऊपर, तो वो आपको बुद्धि देंगे, शक्ति देंगे, श्रद्धा देंगे ये समझने के लिए. The problem is not from Krishna's side. समस्या कृष्णा की तरफ से नहीं है. Please understand that Krishna is not going to have difficulty giving you intelligence and faith to understand what's coming from him. ये कृपया इस बात को समझने का प्रयास कीजिए. कृष्णा के पास कमी नहीं है इस बात को आपको समझाने, आपको श्रद्धा और आपको बुद्धि देने के लिए कि आपको कहाँ जाना है, किसके पास जाना है. That's not the problem. ये समस्या नहीं. Prabhupada said the problem is how sincere and serious are you to want to hear Krishna's instruction. प्रभुपाद बताते हैं कितने गंभीर और कितने एकनिष्ठ हैं आप कृष्ण के निर्देशों को सुनने के लिए. And how much faith and willingness will you show in executing those instructions. और आप कितनी श्रद्धा और कितनी इच्छा दिखाएंगे उन निर्देशों को पालन करने के लिए. One time one devotee came and said, Maharaj, can you just tell me what Krishna wants me to do? एक बार एक भक्त मेरे पास आए और उन्होंने मुझसे कहा, महाराज क्या आप मुझे बता सकते हैं कृष्णा मुझसे क्या चाहते हैं. And then I was just sitting praying thinking, what type of question is this, right? तो मैं बस वहाँ बैठा था, मैं सोच रहा था, मैं प्रार्थना कर रहा था, मैं पूछ रहा था ये किस तरह का सवाल है. Then I said, if Krishna gives you that instruction through the Guru, will you accept it faithfully and try your level best to surrender to those instructions? तो मैंने उससे कहा क्या तुम श्रद्धा के साथ उसको पालन करने का स्वीकार करोगे जो निर्देश तुमको कृष्णा के माध्यम से मिलेंगे. क्या तुम तैयार हो पूरी तरह उनको स्वीकार करने के लिए, उनका पालन करने के लिए? And she said, I'm not sure if I really can do that. और उन्होंने कहा मुझे विश्वास नहीं है कि मैं पूरा उसको कर पाऊंगी. So then why will Krishna tell you to do something that you're not sure that you will do? तो क्यों आपको कृष्णा कुछ ऐसा बताएंगे कि आप जब पहले उनको दिखा रहे हो आप जरूरी नहीं आप उसको पालन करोगे या नहीं. That means you're not trusting Krishna knows what is best for you. या इसका मतलब आप कृष्णा पे भरोसा नहीं कर रहे हैं कि वो जानते हैं आपके लिए क्या सर्वश्रेष्ठ है. So then she said, well, if you just tell me what Krishna wants me to do, then I'll decide whether I want to surrender or not. फिर उसने मुझसे कहा कि अगर आप बस मुझे थोड़ा बता दें कि कृष्णा मुझसे क्या चाहते हैं तो मैं फैसला करूंगी कि मैं इस पे शरणागत करना चाहती हूँ कि नहीं. I said, it doesn't work like that. मैंने कहा इस तरह से ये काम नहीं करता. First you have to surrender to Krishna and trust Krishna that he knows what's best for you, and then you'll hear it, put faith in it, and try your best to accept it and to execute it. Then he'll tell you. पहले आपको भरोसा करना होगा कृष्ण को और उनको सुनने के लिए तैयार होना होगा, सहमत होना होगा उनकी बातों को पालन करने के लिए, तब वो हमें बताएंगे. So don't try to figure out how Krishna is going to be able to get you the answer. तो ये पता करने का प्रयास मत करो कि कैसे कृष्ण आपको उत्तर देंगे. First, ask yourself, how badly do you want to hear the answer? पहले ये देखने का प्रयास करो कि कितनी बुरी तरह से तुम उस उत्तर को सुनना चाहते हो. And will you faithfully execute the instructions that Krishna gives you? और आप पूरी श्रद्धा से उन निर्देशों का पालन करेंगे जो कृष्ण ने आपको दी है. So are you prepared for that? क्या आप तैयार हैं उसके लिए? Then worry about how Krishna is going to convince you. तब चिंता कीजिए कि कैसे कृष्ण आपको आश्वस्त करेंगे. How badly do we want to know? कितनी बुरी तरह से हम जानना चाहते हैं. And are we prepared to accept what Krishna tells us? और क्या हम तैयार हैं उसको स्वीकार करने के लिए जो कृष्ण हमें कहना चाहते हैं. And if that is not there, then Krishna will not say. अगर ये नहीं है तो कृष्ण नहीं कहेंगे.
then you'll just be lost in false ego mental speculation program. तो आप बस भटक जाएंगे इस अपने मिथ्या अहंकार में और इस मनोधर्म के प्रोग्राम में। Maybe this, maybe that, maybe here, maybe there, हो सकता है यहाँ, हो सकता maybe है in this वहाँ, category or that हो category. सकता है इस श्रेणी में, हो सकता है उस श्रेणी में। You'll just be groping and speculating and guessing calculatedly. आप बस भटके रहेंगे और ढूंढते रहेंगे और गलत गणना करते रहेंगे और On भटके a रहेंगे। material mental platform, इस भौतिक मानसिक स्तर which पे is all controlled by Maya. जो पूरी तरह से माया के नियंत्रण में है, That is the alternative. यही दूसरा रास्ता है। What do you think sounds better? क्या क्या ज़्यादा अच्छा लगता है आपको? Who do you want to be your master, Krishna or Maya? आप किसको अपना मालिक बनाना चाहते हैं, कृष्णा को या माया को? That's the only question. यही एकमात्र सवाल है, Krishna or Maya? कृष्णा या माया? We have two choices. हमारे पास दो चुनाव हैं। Who do you want to surrender and serve, Krishna or Maya? किसको आप शरणागत सेवा करना चाहते हैं, कृष्णा को या माया को? Who do you want to direct you in your life, Krishna or Maya? आप किसको अपने जीवन का दिशा निर्देशन देना चाहते हैं, कृष्णा को या माया को? Who you hear from, Krishna or Maya? आप किससे सुनेंगे, कृष्णा से या माया से? That's the only question. यही एकमात्र सवाल है। It's very simple. ये बहुत सरल है। What is the confusion? इसमें भ्रमित करने वाली क्या चीज़ है? Isn't it very simple? ये बहुत सरल है, But not easy to do. लेकिन आसान नहीं है करने में। Because Krishna says, Mama Maya Dharataya. It's my Maya. क्योंकि कृष्ण कहते हैं ये मेरी माया है And she's very, very powerful. और ये बहुत बहुत शक्तिशाली है। And without surrendering genuinely to Krishna, nobody can overcome Maya. और बिना सही अच्छे तरीके, बिना शरणागत के कृष्णा को कोई भी माया से बाहर नहीं आ सकता। Nobody can get out of the clutches of Maya. कोई भी माया के चंगुल से बाहर नहीं आ Even the सकता। great yogis, mystic yogis, यहाँ तक के बड़े बड़े योगी they have so much control over mind and senses. जिनको बहुत ज़्यादा नियंत्रण है मन और इंद्रिय के ऊपर, Still, ultimately, they also fail. फिर भी अंत में वो भी असफल हो जाते हैं। What to speak about us? हमारा क्या कहना? So that's the test. तो ये How परीक्षा badly do है, we want to get out of Maya? कितनी बुरी तरह से हम माया से बाहर आना चाहते हैं। I guess if the suffering is too much, then we may think, oh, I should surrender to Krishna. मुझे ऐसा लगता है जब हमें दुख बहुत ज़्यादा मिल जाएगा तब हम सोचेंगे कि मुझे अब कृष्ण को शरणागत करना चाहिए। How much anxiety can you tolerate? कितना ज़्यादा चिंता आप सहन कर सकते हैं? When you can't live one more second जब आप of this anxiety and disturbance, then you'll surrender to Krishna. जब आप एक क्षण भी बस नहीं रह पाएंगे, सहन नहीं कर पाएंगे इस चिंता को, तब आप जाकर कृष्ण को शरणागत करेंगे। Even one more moment, यहाँ तक कि एक क्षण Maya भी will आप, force you to surrender to Krishna. माया पूरी तरह से आपको जबरदस्ती करेगी कि आप She'll कृष्ण put शरणागत so करो। much heavy lashes on top of you. इतना कड़ा कड़ा प्रहार करेगी आपके ऊपर, It'll be intolerable for you. पूरी तरह से असहनीय हो जाएगा आपके लिए। Only you can think, I just need relief. आप बस इतना ही सोचोगे मुझे किसी तरह राहत चाहिए। So Maya is doing thankless tasks. She's forcing us to surrender to Krishna. तो माया पूरी तरह से हमारी बिना किसी थैंक यू के हमारी मदद कर रही है, Because we're not allowing Krishna to attract us towards him. क्योंकि हम कृष्ण को अनुमति नहीं दे रहे हैं कि वो हमें अपनी तरफ आकर्षित करें, Because we're very rebellious, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा very विपरीत हैं, stubborn, बहुत जिद्दी very हैं, foolish, बहुत मूर्ख हैं, very addicted, बहुत ज़्यादा नशा लगा हुआ है हमें, in Kali Yuga very unfortunate. और कलयुग में हम बहुत दुर्भागी हैं। So we have a lot of obstacles, big time obstacles, inside and outside. तो हमारे अंदर बहुत सारी रुकावटें हैं, चुनौती है, भीतर से बाहर से लंबे समय से। So unless we get incredible amount of mercy from Krishna and from Sadhu Guru Vaishnava and Shastra, it's impossible to get out of Maya. तो जब तक हमें बहुत ही ज़्यादा कृपा साधु गुरु वैष्णव और शास्त्र से मिलेगा, ये असंभव है माया से बाहर आना।
So how much are we acting to get the mercy तो हम कितना कार्य कर रहे हैं उस कृपा को पाने के लिए? from Krishna, Sadhu Guru, Shastra? कृष्णा, साधु, गुरु और शास्त्र। How greedy are we for that mercy? कितने लोभी हैं हम उस कृपा के लिए? My Guru said, if you're very proud and you think you have it all figured out and you think you're managing everything nicely, then you cannot cry for mercy, you'll not beg for mercy. गुरुदेव बताते हैं अगर आप बहुत आपके अंदर गर्व है, अहंकार है, आपने सब कुछ पता लगा लिया है क्या करना है जीवन में, कैसे करना है, तो आप नहीं बढ़ सकते आध्यात्मिक जीवन में। That's what Maya will do. यही माया आपके साथ। You're too great person. Why you should just beg for anything? आप बहुत महान व्यक्ति हैं, आपको क्यों किसी चीज के लिए भीख मांगनी चाहिए? Why you should beg for mercy? क्यों आपको कृपा की भीख मांगनी चाहिए? Just be strong. मजबूत बनिए, Just be smart. बुद्धिमान बनिए, Take responsibility. उत्तरदायित्व लीजिए। Why you're begging for mercy? क्यों भीख मांग रहे हो कृपा की? Because we need it. क्योंकि हमें इसकी जरूरत है, Because without it, we'll not survive it. क्योंकि इसके बिना हम जीवित नहीं रह पाएंगे। We're completely dependent on mercy of Krishna and Sadhu Guru Vaishnava. हम पूरी तरह से निर्भर हैं कृष्णा के, साधु, गुरु, वैष्णव की कृपा के ऊपर। It's the only way they'll pull us out of Maya. यही एकमात्र तरीका है जो हमें माया से बाहर खींच के निकालेगा। The analogy is there, we're drowning in the deep dark well of material existence. ये उदाहरण दिया जाता है हम इस बहुत ही गहरे अंधेरे कुएं में बहुत ही Just bobbing and drowning. जस्ट डूब रहे हैं इसमें, Deep dark well. अंधे गहरे And we're going गहरे under. कुएं में, और हम उसके अंदर जा रहे हैं और अंदर जा रहे हैं। Then the Guru, he puts down a rope. और गुरु जो है रस्सी नीचे डालते हैं, Out of nowhere, some rope comes down in the deep dark well. कहीं से एक रस्सी आ जाती है उस And then the गहरे Guru अंधेरे said, कुएं में, grab a hold of the rope. और गुरु कहते हैं पकड़ लो इस रस्सी को, Hold it tightly. बहुत मजबूती से पकड़ो इसको। Then Guru Krishna just try to pull you out, spending gallons and gallons of spiritual blood how to get you out of that situation. और गुरु और कृष्ण अपने इतने सारे रक्त बहाकर, आध्यात्मिक रक्त बहाकर आपको उस जगह से खींचने का प्रयास करते हैं। But unfortunately, our grip is not strong enough. We're not clasping it. लेकिन दुर्भाग्य से हमारी जो पकड़ है बहुत मजबूत नहीं, हमने इसको मजबूती से नहीं पकड़ा है। So sometimes we're slipping, falling back down into the deep dark well. तो कभी-कभी हम फिसल कर वापस से इस अंधेरे गहरे कुएं में गिर जाते हैं। In spite of all of the efforts of our Gurudev. इतने सारे कार्यों के बावजूद, इतने सारे मेहनत के बावजूद हमारे गुरुदेव के। But do we realize we're in a deep dark well in a suffering condition? क्या हम महसूस कर पा रहे हैं हम इस अंधेरे गहरे कुएं में, इस दुख में परिस्थिति में हैं? And then in our heart is a burning fire of complete anxiety and disturbance. Do we realize that? Can we feel that? और हमारा हृदय जो है पूरी तरह से चिंताग्रस्त है और पूरी तरह से अग्नि जली हुई है और पूरी तरह से हम परेशान हैं। क्या हम इसको महसूस कर पा रहे हैं? If we don't, that means we're so callous, we're so low consciousness, like animal. इसका अगर हम महसूस नहीं कर पा रहे तो हमारी चेतना बहुत निम्न स्तर की है, यानी कि हम पशु की चेतना में हैं। That means more heavy lashes of Maya is required. इसका मतलब और भी कड़ा प्रहार माया का जरूरत है, Because that will purify you, क्योंकि ये आपको शुद्ध करेगा and humble us, और विनम्र बनाएगा and force us to look for solution ultimately. और हमारे ऊपर जबरदस्ती होगा कि हम समाधान को ढूंढने का प्रयास करें। So Maya is doing thankless tasks. Nobody likes Maya in that sense. तो माया जो है इस तरह का हमारे ऊपर एक थैंकलेस काम कर रही है, कोई भी इस तरह का चाहता नहीं, लेकिन We're like rebellious children. They're getting chastised, they're getting punished by the mother and father, and they're not liking the mother and father. हम उस तरह के विद्रोही बच्चे के जैसे हैं जिसको माता और पिता दंड दे रहे हैं और हमें अपने ये माता पिता पसंद नहीं है। Why are you punishing me like this? क्यों मुझे इस तरह का दंड दे रहे हो? I'm a good boy. मैं बहुत अच्छा बच्चा हूँ। Right? You're a good boy, right? आप बहुत अच्छे बच्चे हो। If you're devotee, then you don't need punishment. अगर आप भक्त हो तो आपको दंड की जरूरत नहीं है। If we're not acting like nice devotee, then we need the punishment. अगर हम अच्छे भक्त के रूप में नहीं काम कर रहे हैं तो हमें दंड की जरूरत है। Isn't it? लेकिन Somebody has to rectify us. Somebody has to teach us, right? किसी को हमें सुधारना होगा, किसी को हमें सिखाना होगा। Prabhupada said, we can be Krishna conscious in one moment
प्रभुपाद बताते हैं हम कृष्ण भावनामृत सिर्फ एक क्षण में हो सकते हैं if we'll just cooperate with Krishna. अगर हम कृष्ण के साथ सहयोग करें बस। So we have a lack of cooperation problem. हमारे अंदर एक कमी है, हम सहयोग नहीं कर रहे सही से। We're cooperating with Maya. हम माया के साथ सहयोग कर रहे हैं। No problem for that. But cooperating with Krishna, oh, this is very difficult. कोई माया के साथ सहयोग करने में कोई समस्या This will be नहीं, कृष्ण very के साथ difficult सहयोग for करना me. बहुत ज़्यादा मुश्किल है, मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है। What are you sitting on the chair for? तुम Huh? चेयर में कुर्सी पर क्यों बैठे हो? Kneeling on the floor. Huh? I am kneeling on the floor. He was kneeling on the floor. Oh. I thought it was like some old lady back there. बूढ़ी महिला बैठी है पीछे। Honestly, I was thinking, who's this old lady who came in the room? You know, like sitting on the chair back there. ये बूढ़ी महिला कौन सी रूम में आ गई है जो पीछे से कुर्सी पे बैठी है? I said, who's this special soul? ये कौन विशेष आत्मा है? Sorry for that. Imperfect sense perception, I you know. अपूर्ण इंद्रिया। Very humbling also. बहुत विनम्र बनाता है। But at least I didn't call you an ostrich, you know. कम से कम मैंने तुमको शुतुरमुर्ग नहीं कहा। We won't go there tonight. We don't want to resume that lila. हम इसको फिर से उस लीला पर नहीं चलना चाहते। Anybody else? कोई और? This is what we're facing. This is the reality of the situation. हम इसका सामना कर रहे हैं, यही है परिस्थिति की सच्चाई। Now we have to make a decision. Krishna says, now you have to decide, Arjuna. You want to serve me and please me, or do you want to serve Maya? तो अब हमें फैसला करना है। कृष्ण बताते हैं अर्जुन को, अब तुम या तो मेरी सेवा करना चाहते हो, मुझको शरणागत करना चाहते हो, मुझको प्रसन्न करना चाहते हो, या माया को करना चाहते हो। That's always the test. यही हमारा हमेशा Every moment is a test. हर एक क्षण ये परीक्षा है। Any moment we're not serving Guru Krishna's instructions, that means automatically we're failing and serving Maya's instruction. किसी भी क्षण अगर हम गुरु और कृष्ण की सेवा नहीं कर रहे हैं, उनको प्रसन्न नहीं कर रहे हैं, उनके निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं, उसी क्षण हम माया को पालन कर रहे हैं, उनके निर्देशों का पालन। That's why we're going like snail's pace. इसी तरह इसलिए हम एक घोंगे की तरह आगे बढ़ रहे हैं। You know the snoot is a snail. आपको पता है घोंगा क्या होता है? It's moving. वो चलता है। Believe it or not. विश्वास करो या नहीं। But really slow. बहुत ही धीरे चलता है। So Grihastha ashram is like this. To make spiritual advancement in Grihastha ashram, my Gurudev said it like a snail's pace. तो गृहस्थ आश्रम ऐसा ही है। मेरे गुरुदेव बताते हैं गृहस्थ आश्रम में आध्यात्मिक प्रगति मतलब घोंगे के जैसी धीमी गति से चलते हैं। Very slow. बहुत ही धीमा। Is it? है कि नहीं? That's why it says brahmachari life is a happy life. इसलिए मैं कहता हूँ ब्रह्मचारी जीवन जो है सुखी जीवन है। Every other ashram is big-headed. हर दूसरा आश्रम जो है बहुत बड़ा सर दर्द है। Sannyasi, vanaprastha, grihastha, big-headed, big problem. सन्यासी, वानप्रस्थ, गृहस्थ बहुत बड़ा सर दर्द है, बहुत बड़ा समस्या। Big disturbances. बहुत परेशानी झेलना पड़ता है। But brahmachari life is a happy life. लेकिन ब्रह्मचारी जीवन सुखी जीवन है। You just chant Hare Krishna, do some seva, take prasadam, take a nice rest, bas. बस हरे कृष्णा जप करो, अच्छा प्रसाद लो, आराम करो, बस। Everything else is problem, big problem. हर दूसरी चीज तो बहुत बड़ी समस्या है। Anyway, what to do? You have to manage, you have to learn lesson, go through everything. क्या कर सकते हैं? आपको सारी चीजें व्यवस्थित करनी है और बहुत सारी चीजें हैं। By listening to Maya, we've unnecessarily complicated our life. माया को सुनकर हमने अपने जीवन में बहुत सारी जटिलताएं So करनी now we है। have to get a good lesson, learn all of those lessons. तो हमें बहुत सारी सीख लेनी है, बहुत सारी शिक्षाओं और चीजों को सीखनी है। Krishna says, I'll do it in such a way that you'll never ask for these things again. कृष्णा कहते हैं मैं इन सारी चीजों को इस तरह से करूंगा कि कभी तुम दोबारा मांगोगे नहीं।
My Gurudev used to say, Grihastha ashram will make you cry. मेरे गुरुदेव कहते थे गृहस्थ आश्रम आपको रोने को मजबूर कर देगा. Then I was thinking, I'm like a grown man. Why will I cry if I'm in Grihastha ashram? मैं सोचा था मैं तो एक बड़ा व्यक्ति हूँ, मैं क्यों रोऊंगा? I didn't understand that. मैं समझ नहीं पाया था उस वक्त. Then when I was in Grihastha ashram, लेकिन जब मैं गृहस्थ आश्रम में था, then one night, baby up screaming, crying. Nobody can pacify the child. एक रात बच्चा उठ के रो रहा था, कोई भी उसको शांत नहीं कर पा रहा था. And former wife is sick, also struggling, right? और मेरी जो पिछली पत्नी है वो पूरी तरह And बीमार I थी, वो भी was कुछ नहीं कर पा रही. exhausted from working all day. और मैं पूरी तरह से थक गया था दिन भर काम करके. And I have this screaming, crying baby, nothing can do to pacify. और मेरे पास ये एक चिल्लाता रोता बच्चा था और कुछ भी उसको शांत It नहीं was कर पा रहा so painful, so intolerable situation. था. इतना दर्दनाक, इतना असहनीय परिस्थिति था. I said, Krishna, how did I get into this situation? ये कृष्ण मैं कैसे यहाँ आके फंस गया. And I was like crying, you know. और मैं रो रहा था. Krishna, how am I stuck in this situation like this, you know? कृष्ण कैसे मैं इस परिस्थिति में फंस गया. And then Krishna reminded me, remember when your Gurudev said, one day you'll realize you'll cry in Grihastha ashram, now you're crying in Grihastha ashram. और तब मुझे कृष्ण ने स्मरण दिलाया कि तुम्हारे गुरु तुमसे कह रहे थे कि क्यों तुम गृहस्थ आश्रम में रोगे, तब तुमको ये चीज़ याद आई. So everything he said was 100% correct. जो भी उन्होंने कहा ये पूरी 100% पूरी तरह सही था. It says every living entity is drowning in the ocean. कहते हैं प्रत्येक जीवात्मा जो है ये डूब रहा है इस. But Grihastha ashram means you're drowning, but you have a basket on your head. गृहस्थ आश्रम का मतलब आप डूब रहे हैं लेकिन सर पे एक पेटी भी है. I went through all of these things. मैं इन सारी चीजों से गुजरा. I'm not speaking theoretically to you. मैं बस एक कथित रूप में नहीं बता रहा हूँ. I'm not like some brahmachari who's just preaching to Grihastha, oh, what is spiritual life? You know, I went through everything. I suffered through many things. मैं ऐसा कोई ब्रह्मचारी नहीं जो बस किसी गृहस्थ को जाके प्रचार कर रहा हूँ कि क्या है तुमको जीवन में कैसे क्या करना है. मैं इन सारी चीज़ों से गुजरा हूँ, इन सारी चीज़ों से गुजर कर पहुँचा हूँ. I saw what works and what doesn't work. मैंने देखा है क्या काम करता है और क्या काम नहीं करता. So this is not some theoretical discussion with you. तो ये कोई मैं कथित चर्चा नहीं कर रहा हूँ आपके साथ. And I'm not trying to offend anybody. That's just the way it's designed by Krishna's original. और मैं किसी के प्रति अपराध नहीं करने का प्रयास कर रहा. इसी तरह कृष्णा ने इसका रचना किया है इस चीज़ का. That's why Prabhupada said, anyway, finish your business, get out of here, try to go back to Godhead. इसलिए प्रभुपाद कहते हैं किसी तरह से अपना सारा काम खत्म करने का प्रयास करो इस भौतिक जगत में और भगवत धाम As वापस soon जाओ as possible. जितना जल्दी हो सके. This is all temporary situation. ये पूरी तरह से काफी कम समय का परिस्थिति And all these relationships, family relationships, all very temporary situations. ये सब जितने जो भौतिक संबंध हैं ये सारे संबंध ये बहुत ही कम समय के लिए हैं. After this life, we'll not be together with any of these family members. इस जीवन के बाद हम अपने परिवार के किसी भी व्यक्ति के साथ अब नहीं रहेंगे दोबारा. Very temporary. बहुत ही कम समय के लिए. Any other questions or points? किसी का कोई सवाल, किसी का कोई बिंदु? Sanatan? Actually, Gurudev, it's explained that when one of our spiritual master is preaching, he is purifying the disciples and followers, so he has to absorb the sinful reactions of those followers and disciples. And so, like if some disciples, they have the seva of preaching and they are First of all, Krishna is the purifying agent. He's the purest of the pure. सबसे पहले कृष्णा जो है शुद्धिकरण के एजेंट हैं, वो सबसे शुद्धता में भी शुद्ध है. So, bona fide guru, he can make Krishna appear by his effort to preach Krishna consciousness. तो प्रमाणिक गुरु जो है कृष्ण को प्रकट करते हैं अपने प्रचार के माध्यम से, कृष्ण भावनामृत प्रचार के माध्यम से. And it's the appearance of Krishna, like the sun, that can destroy darkness and ignorance. और कृष्ण का प्राकट्य जो है सूर्य के प्रकट के होने के जैसा जो सारे अंधकार को दूर कर देता है.
So then the spiritual master, he has to absorb the sinful reactions of the disciple. आध्यात्मिक प्रमाणी गुरु को सारे पापमय फलों को प्रमाणी गुरु को सोखना पड़ता है अपने अंदर अपने शिष्य के. He has to take some reaction from you. उनको कुछ जो है पाप फल लेना पड़ता है अपने ऊपर. That's why it says you should not accept so many disciples, especially unqualified disciples. इसलिए ऐसा कहते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा शिष्य नहीं स्वीकार करना चाहिए, खास करके अयोग्य शिष्य. I cannot understand, like, if Krishna... That's why the spiritual master, he's always disturbed, he's always sick, he's trying to digest all of the sinful reactions of the disciple. इसलिए कहते हैं हमेशा आध्यात्मिक गुरु जो बीमार रहते हैं, परेशान रहते हैं और इन सारे पापमय फलों को वो पचाने का प्रयास करते हैं अपने अंदर. He has to take some of your suffering. उनको कुछ जो है आपका दुख उनको भोगना Try पड़ता to है burn it up in his fire of devotional service. और उसको जलाते हैं अपने भक्ति के अग्नि में. So he's taking heavy load of sinful reactions from you to make it easier for you to become purified and more liberated. तो वो इस भारी भरकम बोझ जो है आपके पाप के फलों को वो अपने ऊपर उठा लेते हैं ताकि आपको शुद्ध कर सके, ताकि आपका आध्यात्मिक जीवन जो है आसान हो सके. Why does Krishna let this happen to who is pure devotee, whom he loves so much, like that spiritual master? Because he wants you to love his devotee. क्योंकि वो चाहते हैं आप उनके भक्तों को प्रेम करें. If someone is willing to suffer for you, to help you, अगर कोई तैयार है आपके लिए दुख भोगने के लिए, आपको मदद करने के लिए, shouldn't you feel some love and affection or some indebtedness towards that person? तो क्या नहीं आप उनके प्रति थोड़ा प्रेम और स्नेह और उनका कुछ उनके प्रति कुछ ऋण विकसित होगा आपके अंदर? Or we're just like Christians, the Christians, they just say, yes, we accept Jesus as our Lord and Master, and now we can do any dumb thing because we accept Jesus. तो ये क्रिश्चियन के जैसा है, जैसे वो कहते हैं कि जीसस को हम अपने मालिक स्वामी मानते हैं और हम जो कुछ अपना जो करना है वो करेंगे क्योंकि जीसस सब कुछ भोगेंगे. So you can just say from your lips, and then you can do all sinful activities, and Jesus is going to suffer on the cross and burn off all of your sinful reactions. This is our mentality. You say you love Jesus, and we're doing like this. तो हम बस अपने होठों से कहेंगे हम जीसस से बहुत प्रेम करते हैं और सारे तरह के पापमय गतिविधि में लगेंगे और कहेंगे जीसस हमारे दुख भोगेंगे और हमारे लिए जो है सूली पर चढ़ेंगे, हमारे लिए जलेंगे वो. Understand? आप समझ रहे हैं? So we sometimes we won't do for ourselves, but we'll do for somebody that we have love and affection towards. हो सकता है कई बार हम स्वयं के लिए ना करें, लेकिन हम उन लोगों के लिए करें जिनके प्रति हमारा प्रेम और स्नेह है, उनके लिए हम करेंगे. Sometimes we don't. So I don't care about myself, but I don't want to hurt this person that I love. कई बार हम सोचते हैं मैं स्वयं की उतनी परवाह नहीं करता, लेकिन मैं उस व्यक्ति को चोट नहीं पहुंचा सकता जिससे मैं प्रेम करता हूं. मैं उसको निराश नहीं करना चाहता. I don't want to disappoint them. मैं उसको निराश नहीं करना चाहता. So maybe we won't do for ourselves, but maybe we'll do for somebody that loves us and that we have love for them. तो हो सकता है हम स्वयं के लिए नहीं करें, लेकिन हम हो सकता है उनके लिए करें जो हमसे प्रेम करते हैं और जिनको हम प्रेम करना चाहते हैं. That's also helping motivating us. ये भी हमें प्रोत्साहन देता है. And then if we love the spiritual master and he's suffering our sinful reactions, will we not desire how to give up the sinful activities so that our guru doesn't have to suffer those reactions? अगर हम गुरु से प्रेम करते हैं और देखेंगे कि गुरु हमारे लिए दुख भोग रहे हैं, तो क्या हमारा इच्छा नहीं प्रकट होगी कि कैसे इस तरीके से हम इस पापों को छोड़ें और किस तरह से हम पापमय जीवन से मुक्त हों? Otherwise, wow, this is great. We can do anything and commit all sinful activity, and Gurudev's going to suffer. Wow, what a great guy, वरना ये बहुत वरना ऐसा हुआ कि वाह क्या बहुत बढ़िया बात है, गुरु हमारे लिए सारा दुख भोगेगा, हम जो मर्जी वो हम करते रहेंगे. Yeah, Jesus, he's so wonderful. He's burning, he's suffering on the cross and
purifying all of our sins, and we're just going to go on sinning like anything because we accept Jesus. Jesus is dying. He's suffering for us. What a great personality is he. हम कह रहे हो वाह जीसस क्या महान व्यक्ति है ये, हम जीसस हमारे मालिक हैं, हम बस हम उनसे प्रेम करें और हम जितने तरह के पाप में कामों में लगे रहते हैं और जीसस हमारे सारे दुखों को भोगेंगे, हमारे लिए तड़पेंगे, हमारे लिए वो जलेंगे. One time I was distributing books in the airport in America, Philadelphia. एक बार जो है मैं ग्रंथ वितरण कर रहा था अमेरिका के एयरपोर्ट में फिलाडेल्फिया में. I was handing out Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam. मैं भगवद गीता श्रीमद् भागवतम ग्रंथ प्रचार कर रहा था. Then one person came screaming in my face, "What about Jesus?" और एक व्यक्ति चिल्लाते हुए मेरे चेहरे के सामने आया, मुझसे कहा जीसस का क्या? And I said, "What about Jesus?" मैंने कहा जीसस का क्या? I said, when I was saying that I was Christian, I couldn't follow anything Jesus is asking of me. मैंने कहा जब मैं क्रिश्चियन था मैं कोई भी एक भी चीज पालन नहीं कर पा रहा था जो जीसस ने कहा है जिन चीजों को. So if I practice Krishna consciousness and it makes me able to follow Jesus' instructions, then is that not a good thing? तो अगर मैं कृष्ण भावामृत का अभ्यास करके अगर मैं जीसस के निर्देशों का पालन अगर सही तरीके से कर पाता हूँ तो क्या ये सही चीज नहीं है कृष्ण भावामृत? Doesn't that make me a better Christian? क्या ये मुझे एक बेहतर क्रिश्चियन नहीं बना रहा है? And this person was shocked by that answer, and it's true. और वो व्यक्ति पूरी तरह चौंक गया मेरे उत्तर से. ये सत्य है. Before I'm saying, "Oh yes, I'm a Christian." और पहले हम कहते थे हाँ मैं क्रिश्चियन हूँ. I accept Jesus as my Lord and Savior. मैं जीसस को अपना रक्षक और अपना स्वामी मानता हूँ. But then have no ability to follow His instructions. और हमारे पास कोई भी योग्यता नहीं है उनको उनके निर्देशों का पालन करने. So what is the meaning of being Christian? तो क्या मतलब है क्रिश्चियन बनने का? And if I practice Krishna consciousness and it makes me much stronger and more pure and more serious about my spiritual life, that means it will make me a better Christian. So what is your problem? तो कृष्ण भावामृत का अभ्यास करके अगर ये मुझे शक्ति दे रहा है, मुझे योग्यता दे रहा है कि कैसे मैं किस तरह से अच्छे तरीके से निर्देशों का पालन कर सकूं, ये मुझे बेहतर क्रिश्चियन बना रहा है, तो इसमें क्या गलती है इसमें? And then the person just walked away. फिर वो व्यक्ति चला गया वहाँ से. What about Jesus? जीसस का क्या? Should I run up in their face and say, "What about Krishna?" क्या मैं भी उनके चेहरे के सामने चिल्ला कर कहूँ कि कृष्णा Why are you का not क्या? surrendering to Krishna? क्यों तुम कृष्ण को शरणागत नहीं कर रहे हो? You rascal. तुम सब बदमाश हो. Maybe I'll do that next time. तो शायद ये मैं करूँ अगली बार. कृष्णा का क्या? All right? Is it helping you? क्या ये आपकी मदद कर रहा है? Sanatana? Yes, sir. So Gurudev, if spiritual master gives instruction to some disciple to also like do some preaching seva, To do business seva? Is that what I think I heard? That's what I heard. But what does he say? He said, what happens if the spiritual master gives the disciples some preaching seva to do something? Oh, preaching seva. Oh. कैसा होगा अगर जो है आध्यात्मिक गुरु किसी शिष्य को निर्देश दें प्रचार का सेवा के लिए? Are you doing for preaching or business? क्या आप प्रचार के लिए कर रहे हैं कि व्यापार के लिए कर रहे हैं? That's interesting how Krishna made me hear business seva. बहुत रुचिकर है कैसे कृष्ण ने मुझे व्यापार सुना दिया. You cannot preach if you're doing it as a businessman. आप प्रचार नहीं कर पाएंगे अगर आप व्यापार के रूप में कर रहे हैं इसको. Because motivation is not pure. क्योंकि आपकी जो प्रेरणा है वो सही नहीं है. Prabhupada said purity is the force. प्रभुपाद बताते हैं शुद्धता जो है वो बल है. So if we're not in pure consciousness and doing for the pleasure of Guru and Krishna to help other devotees, you cannot really be a preacher. अगर हम शुद्ध चेतना में गुरु और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए और भक्तों की मदद करने के लिए कर रहे हैं सही चेतना में सही प्रेरणा के साथ तो हम सही चीज नहीं कर रहे हैं. Like official reciter, you know, like as a business. तो हम बस एक ऑफिशियल प्रचारक हैं बस.
Like you see in ISKCON now, they have like this kirtan mela, right? You have to pay money to go to the kirtan mela, you know. जैसे आप देखेंगे अभी ISKCON में जो है कीर्तन मेला होता है, आपको पैसे देने होते हैं कीर्तन मेला में जाने के लिए. Prabhupada is so proud, he said, you see, we're freely distributing Krishna consciousness, chanting Hare Krishna Mahamantra, and we're not charging anybody, free of charge. Just come, chant, dance, be happy with us. प्रभुपाद बहुत गर्व से कहते थे सभी को कि हम कृष्ण भावनामृत का प्रचार कर रहे हैं बिना किसी पैसे के. हमारे साथ आइए, कीर्तन कीजिए, नाचिए और हमारे साथ आकर खुश होइए. पूरे गर्व से वो कहते थे हम मुफ्त में कृष्ण प्रेम नाम बांट रहे हैं. Now they're charging money to go to the kirtan mela. और अब वो पैसे ले रहे हैं कीर्तन मेला में जाने के लिए. Sometimes I make a joke, you know, the man is like, oh, you'll be coming to the kirtan mela? Okay, that's so much price is there to get in, to get the ticket. कई बार मैं मजाक में लोगों से पूछता हूँ कि ओ तुम कीर्तन मेला में जाने हो तो इतना तुम्हें टिकट का खर्चा इतना लगेगा. Like being at restaurant, you know. जैसे आप किसी होटल में गए हैं. And so you will also take prasad. तो आप प्रसाद भी लेंगे साथ में. Okay, that's 400 rupees. इसके लिए 400 रुपए लगेंगे. And will you require the darshan with the guru? क्या आप गुरु का दर्शन भी लेंगे थोड़ा? Okay, that's 1,000 rupees. उसका 1000 रुपए लगेंगे. And are you expecting to get one garland or some cookie or something like that? क्या आपको कोई माला या कुछ ऐसा खाने के लिए भी कुछ प्रसाद चाहिए? That's very, very expensive though. तो उसके लिए और भी थोड़ा कीमती है वो 5000 रुपए का है. Right? That's not the Vaishnavism. ये वैष्णवता नहीं है. That's not the pure bhakti. ये शुद्ध भक्ति. That's a business. ये व्यापार है, व्यापारिक. And many people doing like this now. अब ये बहुत सारे लोग कर रहे हैं. Even I heard one guru, disciple was saying, the guru is asking, you know, what does your father do before I accept you? What does your father do for business? एक बार यहाँ तक कि मैंने ये भी सुना एक गुरु ने अपने शिष्य से पूछा कि बताओ तुम्हारे पिता क्या करते हैं व्यापार में. And what is your education qualification? और तुम्हारा शैक्षणिक क्या स्थान है, शिक्षा क्या प्राप्त किया है तुमने. And do you have some resume that I can look through? और तुमने क्या अपना कुछ रिज्यूमे लेकर आए हो अपना मेरे सामने मेरे लिए जिसमें मैं देखूं. Can you imagine Mahaprabhu, right? He's dancing in the kirtan, distributing Krishna prema. He said, okay, line up. I want to see your resume before I give you Krishna prema, you know. तो क्या आप कल्पना कर सकते हैं कृष्ण महाप्रभु जो है कीर्तन कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, कृष्ण प्रेमा बांट रहे हैं, फिर बाद में वो कहते हैं चलो सब लोग लाइन में आ जाओ और देखूंगा सबका रिज्यूम क्या है, फिर मैं कृष्ण प्रेमा बांटूंगा. Do you want to come on the Harinam Sankirtan with us? क्या आप हरिनाम संकीर्तन आना चाहते हैं हमारे साथ? Do you want chandan and garland? क्या आपको चंदन और माला चाहिए? This is nonsense. क्या बकवास है? It's like a business, isn't it? एक व्यापार चल रहा है तो. So what kind of guru will say, I only accept rich, educated people as my disciples? किस तरह का गुरु कहेगा कि मैं पूरी तरह से धनी और धनी परिवार के जो शिष्य है अपने पास चाहता हूँ? That's not a guru. ये गुरु नहीं. Real bona fide guru will never say like that. असल प्रमाणिक गुरु कभी भी ऐसा नहीं कहेगा. Any last thing? किसी का कोई आखिरी सवाल? Prabhu, isn't it true this is going on? Huh? क्या सच नहीं है ऐसा चल रहा है ये सब कुछ? हाँ ऐसा चल रहा है. Big business. बहुत Big, बड़ा big व्यापार. business. बड़ा व्यापार चल रहा है. Big money, 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 money. बहुत पैसा 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 पैसा. Brighter than the sunshine, sweeter than the honey. सूरज की रोशनी से भी ज़्यादा चमकदार और शहद से भी ज़्यादा मधुर. Money, money, money. पैसा पैसा पैसा. How rich is your guru? तुम्हारे गुरु कितने धनी हैं? How many temples does he have? कितने मंदिर हैं उसके पास? How many disciples and followers has he collected? कितना शिष्य और कितने अनुयायी? Oh, he must be a pure devotee. ओह अवश्य वो शुद्ध भक्त है. Yes. हाँ. How many crores of rupees does he have in his bank account? कितने करोड़ों रुपए हैं उनके बैंक अकाउंट में? Oh, many, many crore man. Oh, he must be pure devotee. बहुत रुपया है इसको, जरूर शुद्ध भक्त है.
Very clever. Krishna is giving him nice intelligence. बहुत समझदार है, कृष्णा बहुत बुद्धि दे रहे हैं। Maybe I also can get rich, you know. मैं भी थोड़ा पैसे वाला हो सकूं। It's like my nice, like a good ticket out of the poverty, right? ये बहुत अच्छा टिकट है मेरे लिए कि मैं गरीबी से बाहर आ सकूं। This is very unpalatable truth I'm speaking, isn't it? ये बहुत ही कड़वा सच है जो मैं कह रहा हूँ। Any last thing? कोई और आखिरी चीज? Preaching seva or business seva. प्रचार सेवा या व्यापार सेवा। I didn't do that, Sanatan. मैंने ये नहीं किया। Krishna did that. All I heard was business seva. मैंने बस सुना व्यापार सेवा। And he was saying preaching seva. So somewhere between there and here, it turned into business seva. By the time वो प्रचार सेवा कह रहे थे, उनके और मेरे बीच में किसी तरह ये बदल के आते हुए व्यापार सेवा बन गया। Now he'll say because it had to pass through some devotees in front who were business-minded, so somehow it got contaminated on the way. You know? तो वो कहेगा आपके बीच में कुछ व्यापार वाले मानसिकता वाले व्यक्ति है, तो उनको छूते हुए आते हुए व्यापार सेवा बन गया। When it left my mouth, it was preaching seva. जब मेरे मुंह से निकला था, on the way, you know? जब मेरे मुंह से निकला था प्रचार सेवा निकला था, रास्ते जाते जाते व्यापार सेवा। Something in the atmosphere, you know, it वातावरण में changes कुछ it. ऐसा था जो बदल दिया उसको। Somebody else's fault, you know? किसी और की गलती है। And it bounced off Adam's head, you know? और ये एडम के सिर से टकराते हुए गया। All right. Any last thing I should know? कोई आखिरी चीज जो Yeah. मुझे जाननी है? Maharaj, when Chaitanya Mahaprabhu, he came to give this love of Godhead, Yeah. and he took so much of pain for the conditioned soul, You took so much what? so much for the conditioned souls. Yeah. He came from Golok Vrindavan. Yeah. Then on the name of religion and so much of discrepancies, or so many on the name of pure love of Godhead, so many wrong things are happening which should not happen. And also this is an offense to commit sinful activities on the strength of holy name. Then why not Mahaprabhu exposing them, or why doesn't it come in the light, or is it that this will happen automatically? I mean, why? Real sadhu guru, they'll always speak the truth, and the truth will expose the untruth. असल साधु जो है हमेशा सत्य को बताएंगे, और ये सत्य जो है हमेशा जो असत्य को बाहर दिखा देगा। Then everyone has to compare. What do you want? Do you want to? Are you persuaded by the truth, or are you persuaded by Maya? और हमें तुलना करनी होगी, आप किसके प्रति ज़्यादा सहमत हैं, माया के प्रति या कृष्णा के प्रति? And most people, they want Maya. ज़्यादातर व्यक्ति जो है वो माया Most चाहते हैं। people, they want to get cheated. ज़्यादातर व्यक्ति जो है ठगे जाना चाहते They want the vanchana, हैं, वो उनको वंचना चाहिए, not kripa. कृपा नहीं चाहिए। So there has to be this type of cheating that's also allowed, तो इस तरह का ठगी भी है जो चल रहा है, because everybody gets what they deserve. क्योंकि सभी को वही चाहिए जो जिसके वो लायक है। Then what will it take for us to get a good heavy lesson, to want to really surrender to Krishna? Then we have to go through so many things. तो वो कौन सी चीज़ है जो हमें ऐसी कड़ी शिक्षा देगी कि हम कृष्ण को शरणागत करें? तो हमें उन सारी चीज़ों से गुजरना होगा। Most people don't really want Krishna, therefore they don't really want and deserve bona fide guru. ज़्यादातर लोग कृष्णा नहीं चाहते हैं, इसीलिए उनको कृष्णा प्रमाणिक गुरु उनके नहीं मिलते हैं। Therefore we're just taking the guru as a fashion or for some materialistic purpose. इसीलिए हम गुरु को बस किसी तरह का फैशन या किसी तरह का भौतिक उद्देश्य से ग्रहण कर लेते हैं। This is not really spiritual thing. ये असल में आध्यात्मिक चीज़ नहीं है। It will have no spiritual good effect. हमारे पास कोई आध्यात्मिक सही प्रभाव नहीं होगा। We're cheating means we'll get cheated. हम ठग रहे हैं, इसका मतलब हमें भी ठगा। If we're cheating, then there's cheating guru. अगर आप ठग रहे हैं, इसका मतलब ठगने वाले गुरु भी हैं। I'll read you one last thing. मैं एक आखिरी चीज़ आपके लिए पढ़ता That हूँ। way I can quote authority and you won't think I'm making this up. इस तरह से मैं जो है प्रशासन को बताऊंगा, जो और इस तरह से आप समझेंगे मैं बस अपनी बातें नहीं बता रहा हूँ।
Yeah. So Srila Prabhupada is speaking in Madhya Lila, Chaitanya Charitamrita, first chapter. श्री श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं चैतन्य चरितामृत मध्य लीला के प्रथम अध्याय में In 220 purport. 2 और 22 श्लोकों में It says a jealous person who is in the dress of a Vaishnava is not at all happy to see the success of another Vaishnava who's receiving the Lord's mercy. ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति जो वैष्णव के भेष में है वो किसी अन्य वैष्णव को सफल होते हुए देखता है तो वो इस चीज को झेल नहीं पाता. Unfortunately, in this age of Kali, there are many mundane persons in the dress of Vaishnavas. दुर्भाग्य से इस कली युग में ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं जो इस वैष्णव के भेष में हैं. And Srila Bhaktivinoda Thakur has described them as disciples of Kali, Kali Chela. और श्रील भक्तिविनोद ठाकुर ने इनको बताया है कली के शिष्य, कली चेला. This is a pseudo Vaishnava. ये बस दिखावटी वैष्णव है. Not real Vaishnava. असल वैष्णव नहीं. They have tilak on the nose. उनके तिलक है उनकी नाक में. Kunti beads around their neck. कंठी माला है उनके गले में. Such a pseudo Vaishnava associates with money and women. ऐसे दिखावटी वैष्णव जो संग करते हैं स्त्री का और पैसे का. And is jealous of successful Vaishnavas. और इनको ईर्ष्या होती है सफलता दूसरे वैष्णवों की. Although passing for a Vaishnava, यद्यपि वैष्णव का and his only business is earning money in the dress of a Vaishnava. उसका एकमात्र व्यापार होता है पैसा कमाना वैष्णव के भेष में. Bhaktivinoda Thakur therefore says that such a pseudo Vaishnava is not a Vaishnava at all. भक्तिविनोद ठाकुर बताते हैं ऐसे दिखावटी वैष्णव जो है असल में बिल्कुल भी वैष्णव नहीं है. But a disciple of Kali Yuga. बल्कि एक शिष्य हैं कली युग के. A disciple of Kali Chela cannot become an acharya. कली के शिष्य कभी आचार्य नहीं बन सकते. By the decision of some high court. किसी फैसले के कुछ न्यायालय के. Mundane votes have no jurisdiction to elect a Vaishnava acharya. इस तरह के बिना मतलब के जो मत हैं ये आचार्य को आचार्य नहीं बना सकते. A Vaishnava acharya is self-effulgent and there's no need of any court judgment or vote. वैष्णव आचार्य स्वयं जो है प्रकाशमान होते हैं और उनको किसी तरह का मतदान की जरूरत नहीं होती, उच्च न्यायालय के आदेशों की जरूरत नहीं होती. A false acharya may try to override an actual Vaishnava. एक मिथ्या आचार्य जो है हो सकता है असल आचार्य के ऊपर जाने का प्रयास करे. Even by high court decision. यहाँ तक कि उच्च न्यायालय के फैसलों के माध्यम से. But Bhaktivinoda Thakur says that he is nothing but a disciple of Kali Yuga, Kali Chela. लेकिन श्री भक्तिविनोद ठाकुर बताते हैं वो और कुछ नहीं, सिर्फ और एक सिर्फ शिष्य है कली का, कली चेला. That is not Mahatma, that is Duratma. ये महात्मा नहीं है, ये दुरात्मा है. That will not help us. This type of person will not help us. ये हमारी मदद नहीं करेगा. इस तरह के व्यक्ति हमारी मदद He नहीं must be करेंगे. Mahatma, real Mahatma. ये अवश्य ही महात्मा होना चाहिए, असल महात्मा. We must want that type of guru. हमें अवश्य ऐसा गुरु चाहिए. We must be also qualified. हमें अवश्य भी स्वयं भी योग्य होना होगा. And guru also qualified. और गुरु भी योग्य होना होगा. So, the Hari Bhakti Vilas says that 1 year should be taken to study one another, the guru and the disciple. तो हरि भक्ति विलास में बताया गया है 1 साल का समय लेना चाहिए एक दूसरे को समझने के लिए, गुरु को और शिष्य को भी. The guru also will see whether that person is fit and qualified to become a disciple.
गुरु भी ये देखेंगे ये व्यक्ति सही है या नहीं, शिष्य बनने के योग्य है या नहीं। And the disciple also will see whether this gentleman can become my guru. और शिष्य भी ये देखेंगे कि ये जो भद्र व्यक्ति हैं ये भी मेरे गुरु बनने योग्य हैं या नहीं। So the qualification of that guru, he should be Mahatma and a Muni, not Duratma. तो गुरु के गुण हैं वो महात्मा होने चाहिए, मुनि होने चाहिए, दुरात्मा नहीं। Muni means philosopher. मुनि का मतलब है And दार्शनिक। And Mahatma means God realized. और महात्मा का मतलब है भगवत दर्शन। So Mahatma means God realized philosopher. तो महात्मा का मतलब है भगवत दर्शन किए हुए व्यक्ति, दार्शनिक। Only he can know. सिर्फ वही जान सकते हैं। So if we want to cheat, then there's also Kali Chela is there. अगर हम ठगना चाहते हैं तो कली चेले भी हैं। In the dress of Vaishnava. वैष्णव के भेष में। So what do we want? तो हम क्या चाहते हैं? If we're cheating, we're going to get cheated. अगर हम ठगना चाहते हैं तो हम If we're taking it cheaply, we want an easy process, then you get a cheap, easy guru. और अगर हम सस्ता गुरु चाहते हैं, सस्ता प्रक्रिया चाहते हैं, तो हमें ऐसा सस्ता गुरु और सस्ता प्रक्रिया भी मिलता है। Then he'll just flatter you. वो आपको बस हंसाएगा। For Pratishta Pranam Pranami. प्रतिष्ठा के लिए, प्रणाम के लिए, प्रणामी के लिए। He won't speak the unpalatable truth to you. इस तरह का कड़वा सच नहीं बोलेगा आपको। He'll not try to purify and free you from your false ego. वो आपको शुद्ध करने का, मुक्त करने का प्रयास नहीं करेगा। He'll not bother to try to understand you and your questions and answer them patiently to try to destroy your doubts. वो ये परेशानी नहीं उठाएगा आपकी समस्या को समझने के लिए, आपके प्रश्नों को सुनने के लिए, आपके संदेहों को समझने के लिए, उसको नष्ट करने के लिए। That is not guru. It's a guru. ये गुरु नहीं है, गुरु है। It's not guru. It's laghu. इस गुरु, ये गुरु नहीं, ये लघु है। You want a guru means heavy, or you want a laghu? आप गुरु चाहते हैं या फिर लघु चाहते हैं? Pat you on the head. Yes, very nice. आपके सर को ठोकेगा क्या? बहुत अच्छा। Just give your donation to my servant. बस अपना प्रणामी देते रहो मेरे दास को। He'll give you a garland and a cookie. आपको एक माला मिलेगा और एक बिस्किट मिलेगा। Just be satisfied. बस संतुष्ट हो जाओ। You got mercy. आपको कृपा मिल गया। And then you're walking out. Really? I got mercy? और आप वहाँ निकल गया। सच में कृपा मिला मुझे। I don't feel that. मुझे महसूस नहीं हो रहा कृपा। I feel like I lost a lot of money, but I don't feel the mercy. मुझे ऐसा लगा मैंने बहुत पैसे खो दिए, कृपा का पता नहीं। You're like be checking for your wallet, you know? अपना वॉलेट ढूंढने में कहाँ गया? All the pickpockets, right? सारे पॉकेट मार। Then you walk out. You walk out, you're supposed to feel lighter, you know, but that's not what it means, you know? आप थोड़ा हल्का महसूस करेंगे, थोड़ा आप समझ रहे होंगे क्या कहना चाह रहा हूँ। You're supposed to take all your sinful reactions, not your wallet, you know? आपके पाप में फलों को लेना है, आपके वॉलेट को नहीं। And honey, do you feel lighter? Yes, I feel much lighter now. पत्नी क्या तू थोड़ा हल्का महसूस कर रही हो? हाँ मैं थोड़ा हल्का महसूस कर रही हूँ। Did we get mercy? Boy, I hope so. लगता है मिला होगा। Are we going to be able to feed the kids this week? क्या बच्चों को खाना मिलेगा इस हफ्ते की? Are we all doing Tapo Divyam again this week? क्या फिर से इस हफ्ते तपो दिव्यम करना होगा? Hare Krishna. It's all going on in the name of religion, right? ये सब कुछ चल रहा है धर्म के नाम पे। Now you see why everybody loves me in my preaching? क्या आप देख सकते हो क्यों मुझे सब इतना प्यार करते हैं मेरे प्रचार को? सारे गुरु। That's why they're rolling out the red carpet whenever I come. इसलिए वो लाल कारपेट बिछाते हैं मेरे लिए जब मैं यहाँ आता हूँ। You think so? क्या आपको ऐसा लगता है? They'll hate you. You'll be the biggest threat. वो पूरी तरह नफरत करेंगे आपसे, आप उनके लिए सबसे बड़ा खतरा है। They'll try to silence you. आपको पूरी तरह शांत करने का प्रयास करेंगे। In China Communist Party, they say they'll disappear you.
चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी कहते हैं कि वो आपको पूरी तरह से गायब कर देंगे। गायब कर देंगे आपको। I had one president of one temple, big temple. एक बहुत बड़े प्रेसिडेंट हैं, बहुत बड़े मंदिर के अध्यक्ष हैं। And after the Ishtagosti, I said many things in the Ishtagosti. They were not happy with me. इष्टगोष्ठी हुई हम, मैंने उस इष्टगोष्ठी में बहुत सारी चीजें कही और वो लोग मुझसे खुश नहीं थे। I was asking too many questions. मैं बहुत सारे सवाल पूछ रहा था। And then afterward, the president, he called me and he said, Murli, please, I want to talk to you, और उसके बाद जो है वहाँ के अध्यक्ष ने मुझे बुलाया और कहा, मुरली, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। I was younger devotee then. मैं उस समय थोड़ा जवान भक्त। Then he said, it's very obvious in that discussion, Ishtagosti, you know many, many things. और ऐसा जरूर लग रहा था उस चर्चा में, उस इष्टगोष्ठी में कि तुम बहुत सारी ऐसी चीजें जानते हो। And he said, and these people don't. और ये लोग जो है वो सारी चीज नहीं जानते हैं। And honestly, we want to keep it that way. और ईमानदारी से कह रहा हूँ, मैं ऐसा ही रखना चाहता हूँ इसको। So we like you. तो हमें तुम पसंद हो। But if you keep speaking like this, we're going to have to send you out to the farm. लेकिन अगर आप इसी तरह से बोलते रहोगे, तो हमें आपको जो है फार्म में भेजना पड़ेगा। Then I was thinking, we don't have a farm. मैं सोच रहा था हमारे पास तो फार्म ही नहीं है। I thought it was like the Godfather movie, ऐसा लग रहा था कि ये जो Godfather फिल्म है, ये इसमें मैं हूँ। I thought it was like a mafia movie, ऐसा लग रहा था किसी माफिया फिल्म में हूँ मैं। We like you very much. हमें तुम पसंद हो बहुत ही। But if you keep speaking like this, लेकिन अगर तुम ऐसे ही बोलते रहोगे, we might have to send you out to the farm, if you know what I mean. हमें अवश्य तुमको फार्म में भेजना होगा। तुम समझ रहे हो हम क्या कहना चाहते हैं? We'll take you for a boat ride in the Ganges and put some cement shoes on you. हम तुमको जो है गंगा सफर पे ले जाएंगे और तुमको सीमेंट के जूते पहनाएंगे। You take a nice swim out there. फिर तुम अच्छे से तैरोगे गंगा में। This is shocking information, isn't it? ये बहुत चौंकाने वाला जानकारी है। It's all going on. ये सब कुछ चल रहा है। Whether you like it or not, whether you want to hear it or not, this is the truth. तुम पसंद करते हो या नहीं, तुम इसको सुनना चाहते हो या नहीं, ये सत्य है। So what do we really want? तो हम क्या चाहते हैं असल में? It's very dangerous. बहुत ही खतरनाक। Material world is like prison house. भौतिक जगत कारागार के जैसा है। When you go to the prison house, you're expecting everyone to be perfect gentlemen and lady? क्या आप जब कारागार में जाते हैं, क्या उम्मीद करते हैं वहाँ सभी को जो है एक पूर्ण और सही व्यक्ति और महिलाएं हैं? That means we have false expectation. इसका मतलब हमें बहुत गलत। That means we're foolish. इसका मतलब हम मूर्ख हैं। Why would I go to the prison house and think everyone's going to act like reasonable, gentlemen or lady? क्यों मैं ऐसा सोचता हूँ कि मैं कारागार में जाऊँगा और सभी लोग जो है मुझसे एक भद्र व्यक्ति और भद्र महिला के रूप में मुझे बर्ताव करेंगे? That's my foolishness. ये मेरी मूर्खता है। That's my sentimental understanding. ये मेरी भावुक मानसिकता और मेरी समझ है भावुक। You're swimming with the sharks. अब जो है शार्कों के साथ तैर रहे हैं। Not so easy thing. इतनी आसान चीज नहीं है। Anybody else? Is that good? कोई और? I think it's enough. ठीक है, मुझे लगता है ये काफी हो गया। You had a very nice kirtan. आपने बहुत ही अच्छा कीर्तन। They're very enthusiastic. I was very happy to hear them. जोशीला कीर्तन। I didn't know it was going to be so hot in here when I came in here. मुझे नहीं लगा था यहाँ इतना ज़्यादा गर्म माहौल होगा जब मैं यहाँ आया। That was really a lot of purification, I think, going on there. बहुत ही ज़्यादा शुद्धिकरण चल रहा था यहाँ पे, मुझे ऐसा लगा। I hope you feel better and lighter. उम्मीद है आप बहुत बेहतर और हल्का महसूस करें। And it was all free. We're not going to send the bill to your house, ये बिल्कुल मुफ्त है, हम आपके घर पे बिल नहीं भेजने वाले हैं। Right? Sometimes you go to the place and they think they're taking nice care, and then all of a sudden you open up the bill and they charge you for everything, कई बार आप ऐसी जगह जाते हैं जहाँ बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखा जाता है, और फिर थोड़ी देर बाद वो आपके पास बिल लेकर आते हैं और सब चीज़ की चार्ज दे रहे हैं। One Harinam. He sat for the class, $100 per hour. $100 प्रति घंटे के। He took prashadam. उसने प्रसाद भी लिया।
cookie, garland. माला भी मिल गया. We'll put you on a payment program. Payment program में डालेंगे. In America, honest to God, one of these so-called gurus, he put the demigods in the Prabhupada's temple. Prabhupada said, don't do like this. अमेरिका में एक गुरु ने, अमेरिका के एक मंदिर में एक गुरु ने देवता के एक मूर्ति वहाँ पर डाल दिया, विग्रह. Then on the altar, you know, they have this hundi box, right? You put some coins in there, some dollar, right? और ये जो altar में एक हुंडी बॉक्स होता है जहाँ कुछ डालते हैं. Like donation box. कुछ प्रणामी आप डालते हैं. But this guy, he had a ATM machine, you know. लेकिन इस व्यक्ति ने ATM मशीन लगा दिया. So everybody's like in front of the altar, like putting in their card and punching the number in, like giving donation directly to the demigods, you know. और वहाँ पे हर एक व्यक्ति जा रहे लाइन में खड़े होकर अपने ATM मशीन में डाल रहे हैं और सारा पिन कोड डालकर और इस देवी देवता को जो है प्रणामी चढ़ा रहे हैं. Everyone's praying for devotion and like trying to swipe their card like in this machine in front. वहाँ लोग आए हैं शुद्ध भक्ति से अपनी पूरी ATM कार्ड वहाँ पे घिस रहे हैं. On the altar, you know. Altar पे जाकर. Then they made nice garlands and everything around the money machine, you know. बहुत ही सुंदर माला लगा के रखी उस मशीन को. Some mala, you know. And then what happened was when the new technology came where you can just put the card on top and you don't have to swipe it or stick it in there, right? They were like so relieved, this will be much quicker, you know. और जब ये नई तकनीक आई जिसमें आप जो है कार्ड को बस मशीन के ऊपर रख सकते हैं, आपको स्वाइप करने की जरूरत नहीं है, तो उनको बहुत ही राहत मिला, बहुत काम और ज़्यादा तेज हो रहा है. Now they have this manual one with, right, it's like a Wi-Fi one, right? So the guy, the brahmachari goes in the audience and he goes in between the crowd. Instead of giving you the lamp, he's just saying you can just put your card there, like right now. You don't even have to wait to get up to do the darshan, you know. तो अब जो ब्रह्मचारी है वो बस ऐसे दर्शकों के बीच में अपना एक डिवाइस जो है वो लेकर जाते हैं और उनके और सभी को वाईफाई जो डिवाइस है वो और कहते हैं कि आप बस उसमें अपना कार्ड रखो और सारे सबसे वो प्रणामी निकाल सकते हैं. And you're like, can I have a receipt? You know, can I at least have a receipt? So no, you'll get it on your bank statement. You know, don't worry about it. तो वो कहते हैं क्या मुझे कुछ रिसीट मिलेगा इसका? वो कहते नहीं, तुम्हारे बैंक अकाउंट में दिख जाएगा. Oh, I don't know why these devotees don't love me, you know. पता नहीं ये भक्त क्यों मुझे पसंद नहीं करते. I don't know why I have such trouble in the institution, you know. मुझे पता नहीं क्यों संस्था में मुझे इतना परेशानी बिठाना पड़ता है. Can you understand why it's like that? कि आप समझ सकते हो क्यों ऐसा है? Okay, I better stop before I incriminate everybody anymore. मुझे रुक जाना चाहिए इससे पहले मैं सभी लोगों को क्रिमिनेट कर दूं. Thank you very much for your kind attention. बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ही ध्यानपूर्वक सुना. Let us pray that we're serious and Krishna gives us a serious, nice association. हम प्रार्थना करते हैं कि कृष्ण हमें और ज़्यादा गंभीर और गंभीर संग दें. And life will be more simple and more enjoyable. और जीवन जो है बहुत ज़्यादा सरल और आनंदमय बन जाए. And everything will become more and more clarified, crystal clear, instead of confusing and bewildering. और सभी चीज़ें धीरे धीरे और भी ज़्यादा साफ हो जाए, शीशे की तरह साफ हो जाए और ज़्यादा भ्रम न रहे. That's for our benefit. ये हमारे फायदे के लिए है. Thank you very much. बहुत बहुत धन्यवाद. Shri Gurnitai ki, Prabhupada ki, Śukadeva Swami Shuddha. Samveda Bhakta. Business sale.